हेलो एंड वेलकम टू ए फॉर आर्सेनल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम हियर फॉर अनदर अनदर चिल स्ट्रीम। कहाँ हैं मेरे मॉड्स? किसी मॉड को मुझे कुछ याद दिलाना था। आई एम जस्ट हियर अटेंडेंस लेने आया हूँ। सुदीप हेलो, कोकिला बेन हेलो, विशाल हाउ आर यू, केशव हाउ आर यू मैन, नाइस टू सी यू, कॉमेडी गाइस हियर एज वेल। निखिल को मैंने रिप्लाई कर दिया। अमन हाउ आर यू मैन? अयान कैसे हो मेरे दोस्त? आज सब एक्साइटेड चैंपियंस लीग के लिए, लिवरपूल एंड मैड्रिड। हे जयंत हाउ आर यू? रोशन और डैम अब सारे काफी लोग आ गए। हेलो हेलो यश, कृष कृष्ण अपना नाम क्रिजलर कर दिया, मुझे याद है। यू कैन मेक मी मॉड एज वेल, यस ऑफ कोर्स मैन। अरे जगह नहीं है मॉड्स की अब। हाउ इज इट गोइंग? ऑल गुड मैन। कैसे हो भाई? दोपा भाई कैसे हो? यस हाला मैड्रिड वेरी एक्साइटेड। एलएफसी आज पहला बोर्ड था, बहुत बढ़िया, कंग्रेट्स यार केशव। एंड यूर बैक डूइंग चिल स्ट्रीम्स ऑलरेडी। भाई मेरे जब बोर्ड्स होते थे मैं तो वापस आके आई यूज्ड टू बी ईदर नो मोर स्टडिंग, बट फिर भी मैं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहता था। अकीलीस दक्ष मैन जस्ट अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस, व्हाट अबाउट यू हाला मैड्रिड? आई बी ऑनेस्ट डूड, आई हैड ए वेरी hectic night yesterday and I woke up and I did a lot of chores आज। बहुत सारे काम वाम करे, लॉन्ड्री करी, वैक्यूम किया, कचरा वचरा फेंका, बिन्स रिप्लेस किए, बाथरूम साफ किया एंड नहाया एंड आई वाज लाइक चल कॉलेज चलते हैं। एंड देन आई वाज लाइक वेट, आज ट्यूसडे है, आज मुझे तो चिल स्ट्रीम करना था। सो दक्ष भाई सो नर्वस बस एक्साइटेड, यही तो फीलिंग होनी चाहिए भाई। बिग गेम्स, इफ अ गेम डजंट मेक यू शिट योरसेल्फ इट्स नॉट अ बिग गेम एंड इट्स नॉट वर्थ बीइंग अ फुटबॉल फैन। हेलो अश्विन, हेलो आकाश। हम तो यूरोपा वाले हैं। हाँ ये होता क्या चैंपियंस लीग एक्चुअली, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। हेलो आलोक, हेलो सुजिल, एक्साइटेड फॉर एल क्लासिको, नापोली वर्सेस फ्रैंकफर्ट। अभी 5 आवर्स की चिल स्ट्रीम? नहीं नहीं भाई, मोस्ट लाइकली मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की होगी, मैक्स टू मैक्स, बट मोस्ट लाइकली 2.5 घंटे की। प्रिडिक्शन छोड़ना यार, उतने फुटबॉल पे नहीं करते, बट मुझे लगता है ड्रॉ होगा या फिर मैड्रिड जीतेगी। आई एम रेडी। यस सू 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 दक्ष ब्रो, हाउ इज द वर्कआउट थिंग गोइंग ऑन? हॉरिबल मैन, इतना बिजी हो गया लाइफ में। The thing is, the channel is growing at a rate now that I don't want to lose this momentum. I'm dedicating more and more hours to YouTube, and मेरे दिन ऐसे जा रहे, मेरी रात ऐसे जा रही कि मेरे को वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा है। आई विल बाय अ बाइसिकल इन द नेक्स्ट 2 weeks, जब मैं एक बार लंदन से वापस आऊँगा। एंड देन उसके बाद आई विल प्रॉब्ली जस्ट गो टू कॉलेज एंड वर्क ऑन अ बाइक। सो होपफुली दैट बिकम्स माई वर्कआउट मैन। किसी ना किसी तरह तो वर्कआउट इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया यार। डू यू मिस बीइंग इन इंडिया? समटाइम्स अ लॉट डूड। आई मिस बीइंग इन इंडिया, बट अब क्या ही करें, ये मेरा घर है। आई हैव टेकन टू दिस कंट्री, मेरे को बहुत पसंद है ये कंट्री यार, मजे आते हैं इधर, तो इट्स रियली नाइस। आज क्या है? हेलो भैया, जस्ट हाय बोलने आया हूँ। कोई बात नहीं यशपाल, पढ़ने जाओ पढ़ने जाओ पढ़ने जाओ। ग्रेट बट अ बिट स्कैर्ड। अच्छा तुम लोग अपनी बात कर रहे हो, एड्स डाल डाल के बिग बाइक ले रहे हो। नहीं यार, तुम लोग शॉक हो जाओगे कि कितना कम पैसा मिलता है एक्चुअली यूट्यूब से, अनलेस यू आर एट ए ग्रोथ ऑफ, जैसे जी भाई हैं या फिर बाबा हैं। आई गेस उन लोगों को काफी मिलता होगा, बट बाकी लोगों को आई डोंट थिंक उतना मिलता है अभी तक। चांसेस टू मीट यू, यू स्टे इन इंग्लैंड। England is still a big country, man. If you're in London, then maybe we can meet sometime next month or something. बाकी तो गोलगप्पे तो नहीं है भाई डबलिन में। गोलगप्पे तो नहीं है, यही तो मेरे को दिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Yes, yes, I follow NBA. I'm a huge Kobe Bryant fan. The first team I ever followed was the San Antonio Spurs and the Dallas Mavericks. फिर Lakers because of Kobe. And yeah, अभी सब चलता है यार, अभी just enjoying NBA और क्या। Why did you start YouTube late and not in lockdown? Were you waiting for Arsenal to perform well? Sudeep, very interestingly, I liked consuming content in when it came to YouTube, and लॉकडाउन के ड्यूरिंग ना मैं अपनी मास्टर्स पे फोकस कर रहा था। मेरे को इनफैक्ट उतना आइडिया भी नहीं था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है भी इंडियन फुटबॉल की। आई यूजली जस्ट कंज्यूम सारे वेस्टर्न वाले क्रिएटर्स जो होते हैं। मैं एक बार निधि मानस के चैनल पे गया था व्हेन दे हैड देयर होल यूरोपियन रॉयल्टी वाला थिंग, एंड एक दो बार उनके साथ प्रीव्यू भी करा था मैंने। दैट वाज फन। तो वो कह रहे थे तू भी बना ले, तू भी बना ले, अच्छा होगा, एक दो चैनल्स हैं आर्सेनल के, इतनी कंजेस्टेड स्पेस नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
बट मैं उसको पुश आउट करता रहा। द टाइम आई मेड माई चैनल वॉज इन जून। मैंने जून में चैनल बनाया था ऑफ दिस प्रीवियस सीजन। ये जो भी सीजन स्टार्ट हुआ है इसके जून में बनाया था, आफ्टर वॉचिंग ऑल और नथिंग। मेरे को लगा नहीं है, ये क्लब इतना स्पेशल, इसके लिए तो एक चैनल बनना चाहिए। तो मैंने ऑल और नथिंग देख के चैनल बनाया, बट मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी। माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल केम आई थिंक अ लिटिल बिफोर व्हेन आई वेंट ऑन मानस एंड निधि की जो प्री सीजन स्ट्रीम थी, जिसपे बाबा, मोहक, मैं, आलोक और मानस निधि, हम सब लोग 6-7 लोग थे। तो आई स्टार्टेड माई सीजन एंड मेरी सीजन में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई वॉन्टेड टू बी अ लो की कंटेंट क्रिएटर। मैं इतना इसको सीरियस नहीं लेना चाह रहा था, बट आर्सेनल जीतती रही, जीतती रही, जीतती रही, जीतती रही, एंड आई वाज लाइक, ओ डैम। एंड आई सेड दिस टू मानस एंड निधि सो मच कि यार, मतलब आई हैव जस्ट बीन लकी कि आर्सेनल हैज बीन राइडिंग अ वेव एंड उस पे काफी अटेंशन है, सो मे बी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एन आर्सेनल पर्सपेक्टिव। देखो, चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल, मैड्रिड, बारसा, ये सब कंसिस्टेंटली इतना जीतते हैं, इसलिए इन पे इतना इंटरेस्ट है। हाँ, अलोक इज फ्रॉम स्पर्स, बट अगर हम नहीं जीत रहे होते इस सीजन, मुझे नहीं लगता इतनी ग्रोथ होती। तो आर्सेनल का कंटेंट एंड इस चैनल की ग्रोथ आर्सेनल की सक्सेस पे काफी डिपेंडेंट है, बट टू इंसुलेट फ्रॉम दैट, बिकॉज सीजन कैसे ना कैसे भी चेंज हो जाता है, आई एम ट्राइंग टू मेक डिफरेंट वीडियोस। जैसे आपने देखी होगी लास्ट टाइम मैंने वो वीडियो बनाई ऑन रैशफोर्ड, आई एम करंटली प्रिपेयरिंग अ वीडियो जो कल आ जानी चाहिए ऑन पॉटर। आई नो मैंने पॉटर के बारे में लाइव पे भी बात करी, बट बहुत इंटरेस्टिंग एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पॉटर की। एंड या, सो ऑल ऑफ दैट। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, बट यार कौन मॉड मेरे को याद दिलाएगा? हैड टू टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस दैट सम पीपल हैव डीएम्ड मी। याद है किसी को? ओके, स्लैकी, हेलो, हाउ आर यू स्लैकी? हेलो हेलो दक्ष भाई, क्या बोलते हो? 2-1, आई थिंक इट्स गोना बी द ऑपोजिट यार इम्तियाज, आई एम सो सॉरी। आई थिंक मैड्रिड्स गोना विन दिस वन, बट आई थिंक लिवरपूल विल probably draw it up at the Santiago Bernabeu. Are you from Ireland? Yes भाई, मॉड्स काम पे लग जाओ, स्लो मोड डाल दो। अच्छा याद दिला, अच्छा याद दिला, बहुत ज्यादा आ गया सडनली, मैं सोचूं हुआ क्या ये। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी दोस्त। ओके, यूट्यूब स्टूडियो पे जाते हैं। थैंक्स 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 फॉर रिमाइंडिंग मी। मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑन करी है इसकी, मेरे को याद भी नहीं। आई एम फ्रॉम, आई लिव इन डबलिन इन आयरलैंड, या, बट आई वाज born in Gurgaon, sorry, born in Delhi and I've been raised in Gurgaon. Confidence while talking, perfect, बिल्कुल बढ़िया रियांश। So before I do this, let me just do the customization and टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं करना दोस्त, क्या कर रहा है तू लाइव पे? हम्म 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 एक सेकेंड। हाँ, एक तो स्लो मोड ऑन करते हैं, 30 सेकेंड लगाते हैं स्लो मोड, एंड सब्सक्राइबर्स ओनली, लाइव चैट, लाइव रिप्ले, सब बढ़िया, सब बढ़िया। ओके, वन मोर थिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू स्टार्ट मेंबरशिप्स। काफी लोगों ने बोले मेंबरशिप करो, मेंबरशिप करो। अभी पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, आराम से पढ़, आराम से पढ़ लकी। कैसा, बस पढ़ाई मोर इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है तूने मेरे को सोशल पे भी भेजा था, डोंट वरी, इट्स ऑल गुड। So memberships are going to probably come, but what do you guys really want from memberships? Do you guys want specific content? So my idea about memberships is, अभी जैसे वीकली चिल स्ट्रीम, हफ्ते में एक बार चिल स्ट्रीम होती है फॉर मेंबर्स, आई विल डू अ सेपरेट चिल स्ट्रीम, लाइक अ मेंबर्स ओनली चिल स्ट्रीम, बिकॉज आप लोग देख ही रहे हो कितने कमेंट्स आते हैं। इवन तो अभी 79-80 लोग हैं, यूजली 100 से ऊपर हो जाते हैं, बट बढ़ जाता है यार। पूरा वीक रुकते हैं। थैंक यू यार शांतनु। बट वही है, मैं सोच रहा हूँ एक मेंबर्स ओनली कर लूँ, बिकॉज समटाइम्स ना द क्वेश्चंस गेट बरीड इन दिस, एंड लोगों को फिर वो करना होता है। सो ईदर आई गिव यू मेंबरशिप जिससे आपका नाम हाईलाइट हो मेरे इस पे, एंड आई कैन रीड यू, आई कैन गिव यू प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ मेंबरशिप। एंड देन फॉर मेंबर्स ओनली, इफ यू गो फॉर अ हायर टियर, यूल डू अ मेंबर्स ओनली। 10-20 के साथ क्या स्ट्रीम होगा यार? वो 5 घंटे की स्ट्रीम नहीं होगी ना यार, फिर मैं वो चिल स्ट्रीम आई थिंक आधे घंटे 45 मिनट्स पे कर लूंगा मैं। बट द पॉइंट इज यू गेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोग जिनको एक्चुअली हु वांट टू बी हर्ड, हु वांट टू रियली इंटरैक्ट विद मी एट अ मोर पर्सनल लेवल। मेंबर्स ओनली स्ट्रीम्स का यही फायदा होता है, यू गेट स्पेसिफिक अटेंशन। मीम रिव्यूज वो नहीं पता, बट और एक और चीज मैं सोच रहा था साथ में, नॉट ओनली चिल स्ट्रीम्स, वी कैन डू
जैसे अब कुछ-कुछ कह रहे थे कंस्पिरेसीज़ पे करो, कोई कह रहा है हिस्ट्री पे करो, स्पेस पे करो। सम स्पेशल थीम स्ट्रीम्स आई कैन ओनली डू विद मेंबर्स। सो आई एम ठीक हाँ, यही कीप इट हियर अर्ली एक्सेस टू अ वीडियो। अर्ली एक्सेस से मुझे नहीं पता यार इतना फ़र्क पड़ता है लोगों को या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली सब कंटेंट तो कंज़्यूम करते ही हैं। आज यार मोस्ट लाइकली यहाँ पे अभी 11:42 हो रहे हैं, तो आप मान के चलो 1 आवर 45 मिनट्स और चलेगी ये स्ट्रीम। So some specifically themed streams, like I wanted to do a specific um, stream on conspiracy theories, like famous conspiracy theories, right? वो कर सकते हैं games, specific members only games वाला कर सकते हैं. So हाँ यार शदाब मैंने community post नहीं डाला. So we can do these specific things with members because ऐसे तो यार देखो कितने सारे लोगों के कितने कितने ideas हैं. सम पीपल वांट मी टू प्ले गेम्स, सम पीपल वांट मी टू डू हिस्ट्री, किसी को स्पेस करना है, किसी को F1 करना है। तो यार यही है कि देखो प्राइमरली ये फुटबॉल चैनल है। अब मान लो जब F1 सीजन शुरू हो गया या यू वांट टू टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स, तो आई थिंक आई कैन रिजर्व मेंबरशिप स्ट्रीम्स फॉर दैट। या क्विजेज ऑल्सो कर सकते, पॉप क्विज वाज ऑल्सो वन ऑफ द आइडियाज। स्ट्रीमर्स के साथ पॉप क्विज कर लें, और कुछ नहीं तो members only एक sort of Zoom call रख लेंगे where we can see each other, talk to each other, whatever it is. So yeah, culture, politics, history, whatever it is. मतलब वो मैं उसका कर लूंगा, but my idea was ये 3 tiers होंगे. One is just आपको अपना नाम पे highlight करना है. Two is members only chill streams and third tier will be specific teams. या फिर मैं 2 ही tiers रखूंगा. तो yes, वही है. Um, हाँ हाँ, क्विजेस वगैरह सब है, तो दैट इज माय आइडिया राइट नाउ। एनीवेज 83 ऑफ यू आर वाचिंग, देयर इज ओनली 44 लाइक्स, तो यार इफ यू हैवंट प्लीज कर लो। स्टडी स्ट्रीम व्हेन लेट्स सी यार, लेट्स सी, बिकॉज राइट नाउ मेरे को खुद स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा दोस्त। लाइक कर दो वीडियो एंड दैट्स रियली नाइस। एनीवेज सो चिल स्ट्रीम, 2 tiers आर फाइन एट स्टार्टिंग। हाँ मुझे भी यही लग रहा है यार। I wrote GRE, but I was thinking about the same thing, that how will I be away from everyone in some country when I wrote Cat here, currently giving interviews. Yeah, dude, Auguste, it's not all fun and games. Um, when you think about living alone in a separate country, बहुत glamorized version होता है, but it's all not glamorous. तो it becomes a little tough, man. आप अपने आप रहते हो, you are a foreigner at the end of the day, you have to adjust to their culture, their way of life and everything. तो यही होता है। इसी बात पे ऐड तो नहीं डाला यार मैंने अभी तक। ऐड डालते रहेंगे, कोई बात नहीं। पैसा कितना लोगे देखता हूँ यार। मेरा आइडिया तो ये है कि एटलीस्ट जो एंट्री टियर हो दैट इज एक्सेसिबल टू सम पीपल। आई डोंट वांट टू मेक इट द चीपेस्ट पॉसिबल टियर, वरना सभी मेंबरशिप ले लेंगे, फिर प्रायोरिटी की बात ही नहीं बची। तो थोड़ा सा रहेगा उसमें, एंड इतना रहेगा दैट एटलीस्ट एक दो चीज़ों का खर्चा मेरा निकल जाए, इवन इफ इट इज़ अ कॉफ़ी। एटलीस्ट कॉफ़ी जितनी खर्ची है उसी पे मेरे को मिल जाएगा। यूके में हूँ नहीं मैं, बट काफ़ी लोग जो यूके में है अभिनव, उनको रेसिज्म, दे हैव फेस्ड रेसिज्म। आई हैव फेस्ड रेसिज्म वंस इन माय लाइफ इन आयरलैंड। व्हाट हैपेंड वाज, मैंने ऑरेंज कलर का कुछ पहना था यहाँ पे, एंड ऑरेंज इज अ वेरी लुक्ड डाउन अपॉन कलर। एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर इन आयरलैंड, बट हिस्टोरिकली ऑरेंज के साथ आयरलैंड की बहुत गंदी हिस्ट्री रही है। तो उसके बाद यार वही लगा कि वो बंदा एक था, ड्रंक था, मोस्ट लाइकली आई थिंक 99% ही वाज ड्रंक। ही केम अप टू मी, इज लाइक, डू यू नो व्हाट कंट्री यू आर इन, व्हाई यू वेयरिंग ऑरेंज, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ ऑरेंज एंड आयरलैंड। मैंने बोला व्हाटएवर, मैं तो इग्नोर कर दिया। बट यूके में होता है, गो बैक टू योर कंट्री, डू दिस डू दैट। ऑल्दो अभी आयरलैंड में थोड़े से एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट वो बहुत रूरल एरियाज में हो रहे हैं, मेन सिटी में नहीं है। डबलिन में आपको ये बैलीमुन टाइप्स इन जगहों पे हो रहे हैं। Best country to go to for masters. Okay, I will say undoubtedly, no matter what the discipline is, the best country to go for masters is the US. Now, if in only looking from an education perspective and knowledge production, it's the US. क्योंकि हर नॉलेज यूएस में ही प्रोड्यूस होती है, चाहे लोग कुछ भी कहें। यूएस में आप पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक की लीडिंग एज, आई थिंक दैट इज व्हाई आई प्रेफर द यूएस। नाउ अगर इफ पैसा इज अ कंसिडरेशन और यू वांट टू स्टे इन दैट कंट्री, देन यू कैन लुक टू यूरोपियन कंट्रीज, बट देन लैंग्वेज इज एन इशू. Cost of living is a huge issue in Europe right now because of the Russia-Ukraine war. So you see what you want to do, man. Depends on what you want to do. उसके बाद you can do. Bhaiya, call Devyansh.
भाई का स्ट्रीम वाज वेरी चिल। द थिंग इज यार, अगर मैं किसी गेस्ट को बुलाता हूँ ना इधर, तो गेस्ट को बुलाने से मैं गेस्ट के साथ कॉन्वर्सेशन फ्लो होती है, फिर आप लोगों का चैट मिस हो जाता है। चिल स्ट्रीम्स की बात ही यही है कि व्यूअर के साथ मेरे को बनाना है थोड़ा, तो दैट इज ऑल। Do you live alone in a flat? If not, don't your flatmates get disturbed when you stream? Well, thankfully, I'm streaming when none of my flatmates are home. But I think apart from very few instances where I go, "Hey, Chan Jorginho," तब तक उनके अलावा उसके अलावा I don't think कुछ issue होता है इन लोगों को. They haven't really complained to me, and I haven't really gotten a noise complaint. And these guys also aren't really loud, so I'm guessing the walls are very thick कि आवाज़ उतनी पहुँचती नहीं है. As in some stream yesterday, the channel mods are fighting and swearing at each other. Grateful to be a model where all the mods respect each other. भाई देखो, जैसे जैसे ना बड़े बड़े चैनल चैनल बड़ा होता रहता है ना, क्वालिटी ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ चैनल सब डाइल्यूट होता रहेगा, तो यू माइट एंड अप फाइंडिंग पीपल हु एंड अप बीइंग वेरी कॉन्फ्रंटेशनल एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा मुश्किल होता है. बट गाइस, बिफोर आई टेक एनी मोर क्वेश्चन, ओके, अरे बकारी लजाने इस अकाउंट से आ गया है. सली बाबा एंड चालीस चोर, गिनेस और जेमिसन और एनी अदर आइश, गिनेस 100%. द बेस्ट गिनेस यू विल गेट इज इन आयरलैंड. पीजी के लिए उसे जाना प्रॉफिटेबल है या यू, क्या पीजी के लिए यूएसए जाना प्रॉफिटेबल है या यूके? देखो वही है ना, देखो आपका, आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है. अगर आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है तो बेस्ट नॉलेज तो आपको यूएस में मिलेगी. अगर आपको वहां रहना है तो यूएस में वीजा प्रॉब्लम बहुत है. यूके में इट्स अ लिटिल फॉरगिविंग, बट इट्स स्टिल नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको मैक्सिमम पीजी के बाद 1 या 2 साल मिलते हैं, मोस्ट लाइकली 1 ईयर मिलता है आपको टू फाइंड अ जॉब इन द यूके. एंड तब तक लोग क्या करते हैं, वो जॉब्स के लिए तो अप्लाई डेली करते हैं, देन दे एंड अप वर्किंग इन सुपरमार्केट्स और एनी अदर सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स. तो आपका वीजा कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये आयरलैंड में भी, आयरलैंड में मेरे को 2 साल मिलेंगे नौकरी ढूंढने के लिए बिकॉज आई एम पीएचडी. But most likely in my last year onwards, I will start applying for jobs or whatever, see what university openings are there. Okay. So it is very unlikely. बहुत बहुत difficult होता है ये situation. खैर, अब I'm telling you about जो कुछ लोगों ने question पूछा था. Now somebody had asked me, एक second. I'm not gonna say the name and everything because कुछ लोगों ने कुछ बहुत ही personal question पूछे थे and I've just told them to go get professional help. But somebody had asked me कि आप बोलते इतने अच्छे हो, हाउ डू आई गेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक? ये कॉन्फिडेंस बोलने के टाइम में कैसे लाऊं? नाउ मैंने इसमें बोला हुआ है, पुट योर सेल्फ इन सिचुएशंस, डरो मत, एवरीथिंग. आई थॉट आई एक्चुअली आर्टिकुलेट इट अ लिटिल बेटर, एंड आर्टिकुलेशन इज वेयर आई स्टार्ट. बाय केशव, बाय बाय बाय. सो I think the best way you can gain confidence in any situation, the best way you can end your shyness, social awkwardness, इन सब का रूट क्या होता है? Social awkwardness and shyness का रूट होता है that you think either there's self-esteem, which is I think psychological, or you feel अगर मैं लोगों के पास जाऊंगा और if I approach this person, guy, boy, girl, group कुछ भी हो, um, मैं मेरे पास कुछ होगा नहीं एंड दे वोंट फाइंड मी इंटरेस्टिंग. मैं क्या बोलूंगा, छोड़ना, मैं अपने आप ही चलता हूँ. The best way to actually gain confidence and not feel shy around a group of people is to be articulate. Now, how do you be articulate? My friends, सबसे easiest तरीका है is to read. And don't read falana dhamkana books. Don't read your Tinkles and your Reader's Digest and everything. Read really good books and आपको मिल जाएंगी. अब कौन सी गुड बुक्स हैं, क्या है? यू कैन रीड एनीथिंग फ्रॉम द क्लासिक्स, टॉम सॉयर पढ़ लो, टू any book which is well acclaimed, and it doesn't really have to be about a specific genre. बताऊं क्या होता है guys? मैं आप लोगों से कहाँ कॉन्फिडेंस लाता हूँ कि मैं 5 घंटे आप लोगों से बात करूंगा. ऑफ कोर्स 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका, आप मुझसे चीजें पूछते हो, बट मेरे पास बताने के लिए क्या है? हाउ डू आई कीप यू एंगेज? एंड लोग आएंगे जाएंगे जो भी होगा, बट हाउ डू आई कीप यू गाइज एंगेज? द बिगेस्ट win in my life is, as a kid I read a lot, and even though मैंने कॉलेज टाइम में बिल्कुल एक्सटर्नली कुछ नहीं पढ़ा और अब मैं वापस दोबारा पढ़ रहा हूँ, आई कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद यू. हाउ कैन आई टॉक टू यू अबाउट conspiracies? How can I talk to you about Stanford prison experiment? How can I talk to you about articulation, confidence, anything about life? Half of it is experience, but most of it is comes from the fact that you have to read. And अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडियाज नहीं आएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि देखो आप कुछ पढ़ रहे हो, आप थॉट्स बनाओगे.
your body will unconsciously start making thoughts about this, and you will speak them out. If you start to explain it to yourself, तो और भी अच्छा है. Articulation तो भाई अच्छी ही आती है. Have you read Do Epic Shit by Ankur Warikoo? देखो यार, all these books, they seem really nice. Self-help books, motivational books, they seem very nice and they're very easy and approachable to read. But I would say don't do this. ये आप किताब पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है, एंड यू बी लाइक हाँ, मेरे अंदर कुछ है. इट इज लाइक, जो मैं कहता हूँ, मेंटल मैस्टरबेशन. आपको फीलिंग अच्छी आती है यार. um, निखिल इस पे भी आएंगे, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव. रीड गुड बुक्स, एंड आई विश आई कुड गिव यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स टू रीड कि आप ये पढ़ो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, आप हर एक से बात करने लग जाओगे. नहीं. देख, वही मैं कह रहा था ना सजन, देयर इज नो वन स्पेसिफिक बुक. पिक अप एनी जॉनर यू लाइक. इफ यू लाइक साई-फाई, pick up science fiction books. If you like history, pick up a good history book. If you like other fictional stories, pick up Tom Sawyer, pick up whatever it is. um, और ये भी नहीं कि आप स्टार्टिंग पहली बुक एन रैंड वगैरह पढ़ लो. नहीं, स्टार्ट विद समथिंग लाइटर, समथिंग यू कैन रीड. डोंट रीड दिस फकिंग चीजी फकिंग बुक्स. डोंट रीड योर ट्वाइलाइट सीरीज. डोंट रीड पर्सी. चलो वो भी पर्सी जैक्सन भी पढ़ लो, बट रीड बुक्स जो are considered classics, are considered great books. Don't jump into Tolstoy. Don't jump into Dostoevsky. Start with approachable Tom Sawyer books or whatever it is. Read your fucking classics, and once you read consistently, um, it'll be it'll help you so much in thinking clearly. And once you think clearly, once you have ideas, you will speak clearly. And once you have the confidence to speak clearly, मेरे दोस्तों, उससे आपकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी नहीं होगी. जब आप अच्छे से बोल पाओगे अपने आइडियाज ना, फिर आपका सोशल कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं कर पाएगा. So that's my answer. I hope the person who asked me on Instagram is here. But yeah, okay. So अगर अब जैसे किसी ने पूछा मैं कौन सा कोर्स करूं, वो आप प्लीज यार मॉड लोग वो आंसर कर दो, ताकि आई डोंट हैव टू टेक दैट क्वेश्चन. ठीक है. निखिल पूछते हैं हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव अकॉर्डिंग टू यू. देखो यार, आपको यूट्यूब पे करोड़ों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी. प्रोडक्टिव हो, ये करो, वो करो, सुबह ये क्लीन कर लो, डेस्क साफ होनी चाहिए, ये करो. देखो, हर एक बंदा अपने लिए अलग अलग होता है. आई ट्राई टू गिव यू जेनेरिक एडवाइस, बट यू विल हैव टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू यू. हाँ, Dostoevsky Crime and Punishment's really good. Yeah. But it's a very complex book to get into. All right. So, फ्रेशी या देखो, वही कह रहा हूँ निखिल, कोई भी बुक पढ़ सकते हो. नाउ, when it comes to being productive, Nikhil, I'll tell you one thing. Try and do things. Good afternoon, Joshua. How are you? Um, Try and do things. And it sounds so simple, right? Try and do things that make you at least 1% better than you were today morning. By the end of the day, you should be 1% better. And आप बोलोगे 1% करके तो मैं 100 दिन में 100% हो जाऊंगा. Well, it's sort of an unlimited scale. Now, what do I mean by this? देखो यार, ये मैं बुक्स की बात कर रहा था. Instead of consuming content, and मैं अपने चैनल के detriment पे बोल रहा हूँ, instead of consuming content for 6 hours a day, instead of playing video games, instead of just whiling away your time यार, मतलब इवन इफ यू रीड, मैं तो ये नहीं कह रहा आपको एक हफ्ते में एक बुक खत्म करोगे तभी आपके लाइफ से सक्सेस होगा. तुषार, मैंने आपका कमेंट स्टार कर दिया, मैं ले लूंगा वेब डेव पे भी. सो बिफोर आप अगर इन सारी चीज़ों में टाइम करते हो, येस दे गिव यू ग्रेटिफिकेशन, बट दे रियली डोंट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ इन ज़्यादा, राइट? द रीजन आई से दिस इज, ओके, if you keep doing these things you will feel good in the moment, but आगे जाके क्या है? अगर आप, if you do an experiment where अगर आप एक 3 साल के बच्चे को, एक हाथ में आपके पास ओरियो का बिस्किट है और दूसरे हाथ में सोने का सिक्का है, एंड आप उसको हर दिन ये चॉइस ऑफर करो कि ओरियो बिस्किट खाएगा या सोने का सिक्का लेगा, वो बच्चा हमेशा ओरियो बिस्किट खाएगा, बिकॉज उसको समझ नहीं है अभी, राइट? That is what is instant gratification. You can taste the Oreo biscuit, but if that kid got a Sone ka sikka every day for the next 10 years, he would be fucking loaded by the time he's an adult, right? So all I'll say is
things which give you gratification are okay in the moment, but they don't really add value to your life. And तभी हमारे regrets वगैरह आते हैं कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता. Coming back to being productive, I'll just give you a very definitive list. Number one, stop watching porn. ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा. छोड़ दो. I understand all these things. By the way, yes, as gaming as JML says, audiobooks are also good. I understand all the jokes. ये what was क्या था उसका Lana Bhabhi and Mia Khalifa and all these things, all these jokes. Trust me, cut the fucking porn out of your life. Your life will be so much better, and you will trust me. आप चाहे 10 मिनट में खत्म करो या आधा घंटा porn देखो भाई, आप वो टाइम बचा के ना, मैं कह रहा हूँ आप उस 10 मिनट पुशअप्स भी लगा लोगे, आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी. आप 1% तो उसी में ही बेटर हो जाओगे. जिस दिन आपने 10 मिनट हिलाने की जगह पुशअप मार दिए, चाहे आपसे एक ही हो पुशअप, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ 1% बेटर हो जाएगी. कट द पॉइंट आउट, नंबर वन. नंबर टू, हैव स्पेसिफिक टाइम्स फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, जॉब्स में लोग इतना प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज जॉब्स आर फिक्स्ड 9 to 5. जॉब्स आपके इधर उधर नहीं होते. आपको 6 घंटे डालने होते हैं, 6 घंटे डालो. मेरी पढ़ाई के फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि मैं 10 से 12 बजे सिर्फ पढ़ाई करूंगा. मेरा संडे फिक्स्ड है, मैं सिर्फ मस्ती करूंगा संडे के संडे, या फिर जिस दिन प्रीमियर लीग गेम है, वॉट एवर इट इज. निखिल, फिक्स योर टाइम्स, कट द पॉर्न आउट, डू समथिंग useful which will add value, whether it's reading a book, whether it's a push up, whether it's a sit up, whether it's going out for a 45-minute walk, bro. All of these things will do. And I, like I said, I know ये बहुत generic advice है, but प्रोडक्टिविटी का कोई अगर समाधान होता, देयर इज वन थिंग दैट यू कुड डू टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एवरीवन वुड बी डूइंग इट. बट जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, द सेकंड यू कट आउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड यू टेल योरसेल्फ कि इसका रिवॉर्ड शायद से मुझे 1 महीने बाद मिलेगा, दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर यू. आई विल टेल यू वन थिंग, आप सब लोग एक काम कर सकते हो. थिंक ऑफ योरसेल्फ टू अ टाइम 3 महीने पहले, ओके, एंड यू वुड बी लाइक, अगर मैं 3 महीने पहले एक चीज अपने बारे में चेंज कर लेता तो आज मेरे लिए कुछ डिफरेंट होता. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू दिस फॉर माई सेल्फ. आई अराइव्ड इन आयरलैंड 6-7 months बैक. अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती अबाउट, लेट्स से, द मनी स्पेंडिंग, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, हाउ टू लुक फॉर अ बेटर जॉब, वट एवर इट इज, तो मैं आयरलैंड में अभी, आई वुड हैव हैड मोर मनी, आई वुड हैव बीन मच हेल्दियर, एंड आई वुड हैव बीन जनरली अ लिटिल मोर हैप्पियर, राइट? बट am I doing those things now? क्या am I making financially smart decisions? Am I in the best possible job? Um, am I taking care of what I'm eating? Am I making sure I'm spending money at the right things? So am I doing those things जो मैं expect कर रहा था? काश मेरे को 7 महीने पहले information पता होती. हर टाइम नहीं करोगे, and sometimes कर भी लोगे. So all I'll say is, think of what you wanted a few months back, and are you doing it now? अगर आपका कल एग्जाम है ना, आप सोच रहे हो काश मैं 3 महीने पहले पढ़ लेता ब्रो, बस और कुछ नहीं, एक चैप्टर अ डे ही कर लेता, तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती. तो आज से करो. आई नो अब एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ा कटने का टाइम आ गया, बट ब्रो, जस्ट डू इट नाउ. नाउ डेडिकेट a fixed time in your day to do one chapter a day, or read 20 pages किसी भी बुक के. You could do all of those things. कोई कह रहा है how to quit porn, bro. um, all I'll say is there is no quick way to quit porn. Porn is by business made to be very addictive. Shorts and reel ruined my attention span. देखो यार, बॉडी इतनी अडेप्टेबल होती है ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपके ब्रेन के पैटर्न्स को इतना, जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, यू कैन मोल्ड देम इनटू सच अ वे टू डेवलप अ न्यू हैबिट. प्लास्टिसिटी से ही आपकी हैबिट्स बनती हैं. एंड ये मैं आपको कैसे बताऊं? बिकॉज आई रेड समथिंग अबाउट इट. नाउ, how do I quit porn? How do I get my attention back? How do I stop getting this ADHD, whatever it is? जिन लोगों को genuine ADHD है, I sympathize with you, but some लोगों को um, जो रील्स की वजह से, शॉर्ट्स की वजह से नहीं हो रहा है, there is no simple way. The day you give your phone away at 10 p.m. at your time,
and you don't do anything for 2 months, when your body is forced to adapt to make you do something for those 2 hours, और आप उस 2 घंटे के 2.5 घंटे बना लो, 2.5 घंटे के 3 घंटे कर लो, वट एवर, आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी। पहला 1 हफ्ता बहुत मुश्किल रहता है, बट दोस्तों, इफ पीपल कैन क्विट ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स विच आर फिजिकली ऑल्टरिंग यू, people can quit smoking, drinking, people can quit a lot of bad habits, then quitting porn shouldn't be tough. You want to join the no-fap movement? Join the no-fap movement. I don't care. But trust me, porn will destroy your life. Short span wala bhai, start watching documentaries. Yeah, but listen, whatever activity, if you're doing some activity which does not involve tech, then keep the tech far, far away. अगर आप टीवी भी देख रहे हो, फोन को ऊपर वाले कमरे में या दूसरे कमरे में छोड़ के आओ, ठीक है? इफ यू आर रीडिंग अ बुक, अपना लैपटॉप, टैबलेट, फोन मम्मा पापा को दे दो, बोल दो इसको अपने पास रखो, जितने पासवर्ड डालने डाल दो, बट मेरे से दूर रखो, राइट? कीप इट अवे एंड योर बॉडी विल एडजस्ट, एंड फॉर सम टाइम, मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ भाई, स्पेंड अ डे विद फोन, तो यार विनय बहुत दूर की बात है। आप लोग 5 मिनट बिना कुछ करे नहीं बैठ सकते। मैं भी बहुत मुश्किल होता था, देन आई स्टार्ट मेडिटेशन। किसी ने मेडिटेशन के बारे में पूछा था, मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया, मेडिटेट किया, नाउ इट्स स्टिल फाइन, नाउ आई कैन डू इट। यस, द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग दोस्तों इज राइट नाउ। अभी नहीं करोगे, वो तुम 3 महीने फिर से अपने आप को ये डायलॉग मारोगे, काश मैं ये कर लेता यार। एंड ये चीज, it's not going to be limited to your padhai, to your job, to your exercise, to your diet, to your food, to your gym, to your social media addiction, to your ADHD, whatever it is. Once you start, once you start today, trust me, it'll be better tomorrow. It'll be difficult for the first week, and then it'll keep getting better, 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 better. Web dev ke liye advice, Tushar. The best way to do it, especially if you're getting into computer related disciplines, is online, YouTube. Just take a course, just start a web dev course. There used to be Code Academy मेरे time पे, I don't know अब कैसा है, but Code Academy is really good. अगर आपको self learning नहीं होता है and you need somebody to guide you, then India में काफी सारे code sort of centers होते हैं, computer training centers like आप NIIT ले लो, or you can go for something like Coding Ninjas, जिनके ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। यू कैन साइन अप फॉर वन ऑफ देयर कोर्सेज। आप कर सकते हो इंडिया में। कोडिंग निंजास इज समथिंग व्हाट सम ऑफ माय फ्रेंड्स डिड, एंड इट्स प्रीटी ट्रस्टेड अकॉर्डिंग टू मी, सो यू कैन चेक देम आउट, कोडिंग निंजास, एंड सी उनके पास अगर कोई वेब डेव का कोर्स है या समथिंग, एंड देन यू कैन एनरोल फॉर इट। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ इट्स समथिंग विच यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ या पढ़ाई से रिलेटेड है, योर पेरेंट्स विल नेवर, क्या कहते हैं, विल नेवर से नो टू दैट। ओके, और कुछ क्वेश्चन इसी बात पे दोस्तों, अच्छा खासा अभी हो गया, तो इसी बात पे एक ऐड ले लो आप लोग। ओके, ना जिन लोगों को ऐड नहीं आया उनसे हम बात करते हैं। आया भी है क्या ऐड? नहीं आया, अब आया होगा। हाँ, ADHD का फुल फॉर्म, ADHD का है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके ओके, नाउ इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ, कुछ सजेशंस दो। इसी के बारे में साहिल हमने पहली बात करी थी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको बोलने में तकलीफ होती है, यू नॉट कॉन्फिडेंट, start reading मेरे दोस्त, and not just textbooks. Start reading, once you start reading books and good books, not the, I don't mind चेतन भगत, but चेतन भगत ना ही पढ़ो तो अच्छा है, बिकॉज उसकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है एंड सॉर्ट ऑफ वो हो जाती है, जैसे लोग कहते हैं ना चपटी टाइप इंग्लिश, तो वो हो जाती है, मतलब बहुत ईजी एक्सेसिबल, आप दोस्तों से बात कर सकते हो। प्रोफेशनली अगर आपको करना है, सबसे पहले आपको अपने आइडियाज क्लियर करने होंगे, और वो आइडियाज आएंगे बुक्स पढ़ने से। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे साहिल, आपके आइडियाज उतने क्लियर होंगे और उतनी क्लियरली बोल पाओगे, और आपकी इंग्लिश बेटर होगी। उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे ऐसी बुक्स में जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, टुमल्टुअस, टिटिलेशन, वट एवर इट इज। You will have to sometimes get a dictionary and read these things. तो once you have these things, उसके बाद you can, well, get better at English. That's my point of view. Reading will always improve your language. Premium gang, yes, no ads for me. Hi Faisal, how are you? तेरा भी नहीं आया, हो गया ओंकार, attention deficiency hyperactivity disorder. Daksh, try drink spinach juice daily twice a day. अच्छा, well, यार देखो ये सब ना, my girlfriend makes me drink beetroot, पता नहीं क्या फलाना ढमकाना उसमें होता है। I prefer eating these things, यार।
आई थिंक जूसिंग में ना काफ़ी सारे न्यूट्रिशन भी चला जाता है, तो आई डोंट नो। प्लस पेट नहीं भरता है अगर इन चीज़ों को खाओ ना। मैं नहीं कह रहा कि कच्ची पालक खाने लग जाओ, ईट अ बीटरूट, ईट अ बनाना, व्हाटएवर इट इज़। तो या एड ब्लॉकर है रे सबके पास। अरे यार, यही तो मैं मात खा लेता हूँ। अम, क्या है ये? वरुण कुमार क्या क्या? दक्ष भैया, व्हेन आई स्टडी और वॉच लेक्चर्स ऑनलाइन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली इन 5-10 minutes. This only happens in some subjects like math, eco, but in accounts and law my attention is in full points. Yusuf, I understand all subjects are not very interesting and sometimes this happens, but when you say you get distracted, what do you really do? Are you just like staring and आप बस खो जाते हो अपने ख्यालों में, या फिर अगर ऑनलाइन क्लास है या कुछ है, आप किसी ने कुछ बोला है, मैथ्स में कुछ पढ़ा रहा है, आपने अपना फ़ोन भी साथ में स्क्रॉल कर लिया, चलो ट्विटर देख लेते हैं, चलो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, चलो एक शॉर्ट्स देख लेते हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली पता है कि क्या प्रॉब्लम है। आपने अपने आप को एक ऑप्शन दे दिया है कि मैं इस पे अटेंशन नहीं दे के कुछ और कर सकता हूँ। नाउ अगर आप ख़यालों में खो गए हो, ऑनलाइन की बेस्ट चीज़ ये होती है, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आप दोबारा देख सकते हो। देन यू, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग 1 आवर फॉर पढ़ाई, यू विल हैव टू फिक्स 3 आवर्स फॉर पढ़ाई। कि आप अगर ट्रिपल द टाइम लोगे उसको देखने में, तो आपको ट्रिपल द टाइम लगेगा खत्म करने में और समझने में। हाउ डू आई गेट योर अटेंशन बैक? माय फ्रेंड, देयर इज नो शॉर्टकट। जस्ट समटाइम्स सम सब्जेक्ट्स यू जस्ट हैव टू गेट थ्रू समहाउ। इसका ना कोई ट्रिक है, ना कोई तकनीक है। जिंदगी में आप ऐसे तो सब्जेक्ट्स हर टाइम नहीं पढ़ोगे जो आपको इंटरेस्ट देंगे। तो समटाइम्स जस्ट गेट थ्रू देम, दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे। 3 घंटे लगाओ। अगर आपको अकाउंटिंग एंड लॉ में 1 घंटा लगता है, तो आप 3 घंटे मैथ्स और इको में दे दो एंड बस निकाल दो दोस्त, और कुछ है ही नहीं। श्रीकांत भाई, आई हैव डिस्कस दिस एट लेंथ। कॉन्फिडेंस के सबसे बड़ा की यही है। आप स्ट्रीम वापस देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बताया। एटलीस्ट आई हैव ट्राइड टू बी वेरी गुड एट इट। तो कॉन्फिडेंस विल कम व्हेन यू थिंक यू हैव क्लियर आइडियाज टू टॉक अबाउट पीपल। कॉन्फिडेंस आपको यही इस 2 वजह से नहीं आते। एक तो आपकी सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं जिसकी वजह से, उसका कुछ कॉज साइकोलॉजिकल, उसमें उसके लिए तो आई विल से जस्ट थेरेपी जाओ या हैव अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। द सेकंड थिंग इज, आपके आइडियाज क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है मैं क्या बोलूं, लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। उसके लिए आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए, और आइडियाज क्लियर होने के सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पढ़ो, और या फिर आप सुनो बुक्स को। रीड रियली गुड बुक्स, गेट better at communicating your ideas, get better at seeing how people communicate their ideas, उनसे सीखो। एंड उसके बाद you will have ideas to give, and once you have ideas to give and things to say about, then you will be very confident. Easy नहीं है दोस्तों, मेरे लिए भी 2 घंटे आपके से कुछ भी बात करना, मैं भी कुछ जबड़ जबड़ बोल के बकवास कर सकता हूँ और आपको शायद से अच्छा भी नहीं लगे। बट इफ आई एम क्लियर विद माई आइडियाज, इफ आई नो हाउ टू पेस माई सेल्फ, इफ आई नो कि कब हिंदी मिक्स करनी है, कब इंग्लिश मिक्स करनी है, व्हाट टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट, और आप लोगों को एंगेज रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब मैंने देख देख के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के ही सीखा है। दैट्स ऑल देयर इज। लर्न टू स्पीक इंग्लिश गिविंग प्रेजेंटेशंस, वही है यार विनय। द थिंग इज, अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी वेरी नर्वस व्हेन दे हैव टू गिव देयर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, बिकॉज दे लाइक सब मुझे देख रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। तो यार होता है यार। माय फेवरेट बुक, फाउंडेशन, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, और कौन सी बुक्स थी अच्छी लगी थी? The Ape That Understood the Universe, very very good book, evolutionary biology पे। Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, very good book। Yeah, can I ask you what job do you do? शांतनु यार, तू तो मॉड है, तुझे तो नहीं पता ये। देख यार, I work part time, um, and I work part time where I take care of the kids for a German family. So आप सोच सकते हो, I am a caretaker of the kids. I pick them up from school sometimes. If I have to, I cook them food and I tutor them in English. And I do that and I get paid weekly for it, and it's a good job. दक्ष भाई, हेयर बहुत टूट रहे हैं, एनी एडवाइस? हर हर अगर हो सके हफ्ते में 2 बार, वरना एटलीस्ट 1 बार बालों में चंपी कराओ। आपके माँ बाप को पता है कैसे चंपी करनी है। उनमें से कोई नहीं करता तो आप खुद ही कर लो। नाउ यू कैन यूज एनीथिंग, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, जो भी आपको लगाना है भाई, बस लगा लो, जड़ों को कर दो। और टूट रहे हैं बाल, प्रोटीन खाओ। अगर फिर भी टूट रहे हैं, गो टू अ स्पेशलिस्ट, गो टू अ डॉक्टर। पूछो उनसे क्या हो रहा है, क्या आपको किसी की कमी है, ये क्या जेनेटिक ही है आपके लिए,
कि अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग टकले होते हैं, जैसे मेरी फैमिली में होते हैं, थैंकफुली मेरे अंदर वो जीन नहीं है अभी तक, एटलीस्ट गॉड, थैंक यू गॉड, प्लीज टच वुड। तो आई ईट फिश अ लॉट, आई डू माई सी कॉड कॉड लिवर, विटामिन ले लेता हूँ मैं अपने, एंड तेल लगा लेता हूँ हर दिन तो नहीं, मतलब हर हफ्ते एटलीस्ट 2 बार बालों में तेल, दैट्स इट, ऑल ऑफ दैट। ओके दक्ष, यहाँ पे बच्चे लोग को एनर्जी कैसे बनाए रखे थ्रू आउट द डे, सीक्रेट बताओ भाई। यार एनर्जी तो मेरे पास भी नहीं है, तो आई कांट गिव द बेस्ट थिंग पॉसिबल। आई वुड जस्ट से एनर्जी, honestly I have no advice for this because I get low on energy myself. Just make sure you're taking your vitamins, पानी पीते रहो, do things which excite you, I guess that's the biggest thing. हर दिन possible नहीं होगा doing things that excite you. Some days you will have to open a book and read the most boring things, and you have to like चल यार please दक्ष 5 मिनट, और sometimes it's about getting out of the door and यार वो जिम जाना है यार please. I'll tell you one thing though, जिस दिन आपने सुबह-सुबह एक वर्कआउट निकाल लिया ना, आपके अंदर जो कमाल की एनर्जी होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा खुश होते हो। मतलब मेरे को लगता था ये सुबह जब माँ-बाप कहते हैं ना कभी-कभी डिप्रेशन है तो एक्सरसाइज कर ले, ये क्या बकवास है। ब्रो, मैंने कुछ हफ्ते जेन्युइनली सुबह 6 बजे उठ के बस, और वो प्रॉब्लम होती है कि वो 6 बजे उठ के कमरे से बाहर निकलो। एक बार तुम निकल जाते हो तो फिर पूरा वर्कआउट निकाल के ही आते हो। यू डू दैट वर्कआउट, एंड अगर आपने, चलो मैं तो नहीं कह रहा 45 मिनट करो आप, मैं तो कहता हूँ 20 मिनट भी कर लो। यू वर्कआउट, यू फील दैट स्ट्रेच इन योर बॉडी, यू फील दैट पावर इन योर बॉडी ना, आपका आधे से ज्यादा दिन फुल एनर्जी में निकलता है और खुशी में निकलता है। आप इतने खुश होते हो, आपको लगता है हे राम, थैंक गॉड आई एम अलाइव। सो ऑल ऑफ दिस। दीपांकर कह रहे हैं आप मेडिटेशन करते हैं, हाउ डज इट हेल्प एंड हाउ कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ओके। सो द बिगेस्ट थिंग अबाउट मेडिटेशन इज, यार गेमिंग एज जेमल विल नॉट टॉक अबाउट फुटबॉल इन दिस। सो क्या आप जिडान लोगे, रूनी लोगे, क्या आपकी प्रेडिक्शंस हैं, विल यू टेक दिस पर्सन एट आर्सेनल, विल यू लेट दैट पर्सन गो आउट ऑफ आर्सेनल, हम नहीं करेंगे। हम चिल स्ट्रीम है, चिल स्ट्रीम नॉन फुटबॉलिंग रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, मैं मेडिटेशन करता हूँ, हाउ डज इट हेल्प मी, सिंपल एज मेडिटेशन से ही, मेडिटेशन पहली बात कोई जादू की छड़ी नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिसिन दैट आपने कर दिया आपकी ज़िंदगी बदल गई। बहुत मुश्किल होता है अच्छे से प्रॉपर मेडिटेशन करना, वेयर you learn to focus on one thing, whether it's your breathing or a part of your body. I'm not going to claim that it makes you calm, it'll do this freshness thing to you, it'll cure your depression or whatever. No. The only thing I've personally found meditation to work is um, just help you focus. It helps you focus. इसमें कोई CEO वीओ नहीं बन जाओगे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो. All I'll say is इट विल हेल्प यू फोकस, एंड ऑल दीज थिंग्स जो आप कहते हो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कुछ नहीं, आसान नहीं होता। 5 मिनट मेडिटेशन करो और सिर्फ सिर्फ अपनी ब्रेथ के बारे में सोचो ना, वही बड़ी बात है। सो या क्या हुआ भाई, कौन SJW पंथी कर रहे हैं यहाँ पे। SJW होना वैसे कोई बुरी बात तो नहीं है, बट सही कंटेक्स्ट में करोगे तो बिल्कुल ठीक है। स्टिक टू फुटबॉल से कडाबरा भाई, आप क्या ही कर रहे हो आप, फिर आप इस स्ट्रीम पे हो ही क्यों, फुटबॉल स्ट्रीम पे आओ आप फिर। ब्रो मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी, 6 मंथ्स हो गए, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, पेरेंट्स आल्सो फोर्सिंग टू डू MBA, the only thing that keeps me alive is gym and football. Well, there are two things that you can do. One, you find a job. Actually, three things you can do. One, you find a job and keep your parents off your back for MBA if you don't want to do an MBA. Two, if you really don't know what to do with your life and you hate engineering, then you do listen to your parents because they'll support you and you do your MBA and you hope ki life sort ho jaye. If the things that keep you alive are gym and football, then you have to find a way to make a sustainable living out of these things. Simple as. देखो यार मैं बताऊँ क्या है, मैंने बताया मैं PhD की पढ़ाई कर रहा हूँ, which is a full time job in itself. I work part time as well, but because मेरे को अपने आप को sustain करना है, and I'm also trying to be very regular with my YouTube. जिस दिन मेरा YouTube की इनकम मेरी पार्ट टाइम इनकम के बराबर हो जाएगी, मैं अपनी दूसरी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दूंगा, and I'll focus on just PhD and this. But जब तक नहीं होता, since football keeps me alive, I don't like to walk fucking 45 minutes or go 45 minutes away to a workplace. वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखो, taking care of them, just fucking entertaining them, cook for them, everything. It's not ideal. It's okay, but it's not ideal.
I'd rather make YouTube. बट अगर यूट्यूब मेरी सस्टेनेंस को नहीं कर रहा है, जिस तरह आप कह रहे हो फुटबॉल अगर जिम, अगर आपकी लाइफ में आप उनसे पैसे कमाना नहीं सीखा आपने, या आप उससे पैसे नहीं कमा रहे, तो आप उनको परस्यू तो नहीं कर सकते फुल टाइम. तो figure out a way how to make money out of gymming and football. You want to start a fitness YouTube channel, start. Just want to make shorts about this, start. Do your job and make shorts. Do your job and do football streams or whatever it is. Until the point where you can sustain and depend on them for your living. Um, तो एंड अगर आपको नहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त, आपको एमबीए और इंजीनियरिंग में से, जॉब में से एक ना एक चीज तो चूज करनी ही पड़ेगी. सो all of these things are the only way to do it. Either you find the love in things you hate, or you find a living in the things you love. That's it. That's all I can say. What do you watch when you're free except football? Well, sometimes it's documentaries, sometimes it's anime. It's not really a fixed thing here. I don't really watch a show करके एक ही बार में binge कर दिया. I don't have time to binge. तो yeah, man, all of those things. It's honestly very random. Me seeing so many depressed people in this live stream. I think we generally have a crisis of a mental health crisis जो हम address नहीं करते हैं. There are so many ways of tackling. There are so many avenues of help, but कोई लेता नहीं है. Hi Daksh, I'm currently working in tech support and networking field. When I switch my career to cybersecurity, any suggestions? Well, the best way to do it is if you have a LinkedIn account, Chinmay, see the kind of companies you want to work in, target some companies and see the requirements they have. Some will have your Cisco CCNA certificates or a CompTIA certificate or whatever it is. There are plenty of videos on YouTube on how to also have a very versatile cybersecurity career. थोड़ी certifications करो, apply to these jobs. If you fail, try to get in touch with the recruiter, ask them why they failed you. Was it a lack of knowledge? Was it a cultural fit? Was it that you don't have the requisite background? Figure out how to become a better candidate. But it's a pretty long drawn process. आप figure out करो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन जब सब डालते हैं लिंक्डइन पे, तो है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. जैसे इवेंचुअली इफ आई वांट टू वर्क विद लेट्स से गूगल के थ्रेट इंटेलिजेंस यूनिट में, आई विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी कि गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस पे कोई जॉब पोस्टिंग है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. अगर वो नहीं है, आई विल सी गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस में आजकल कौन काम कर रहा है. लिंक्डइन पे मिल जाते हैं एम्प्लॉयज. आप उनका एक्सपीरियंस देखो, अच्छे इस बंदे ने ये करा है एंड ही हैज लिस्टेड दीज सर्टिफिकेशंस एज हिज वट एवर, एंड इसने एक दो तीन प्रोजेक्ट्स भी बनाए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो मेरे को ये करना है एटलीस्ट टू बी एट दिस पर्सन's लेवल. एंड इफ आई प्रिटी मच रेप्लिकेट what this person's experience is, and if it's possible, then I can apply to threat intelligence whenever it's open, and तब ठीक हो जाएगा. Do you read the Bhagavad Gita? I have read the not the entirety of the Bhagavad Gita, by the way. मैंने I think maybe quarter पढ़ी थी, but वो हिंदी मेरे लिए इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई थी, sort of mix of हिंदी एंड संस्कृत, की यार मुझसे आगे हुआ ही नहीं गया. एंड मुझे इंग्लिश अब्रिज्ड वर्जन पढ़ने नहीं है, बट मैंने उपनिषद पढ़े हुए हैं. हैव यू सीन विनलैंड सागा? मैंने 2 एपिसोड देखे हैं दोस्त. मेरे को वही बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है यार. वेन एवर आई सी समथिंग रियली गुड ना, आई stop myself because I know I'll get addicted, and once I get addicted I will have to leave something. So yeah, watch Vikings. I watched the entirety of Vikings during my masters, dost. How many girls have you dated? Plenty. I mean, there's no reason to go into the specific numbers, but plenty in my life. दक्ष भैया, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है पर मुझे वो फॉलो नहीं करना, उनको कैसे बताऊं? द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट मेरे दोस्त is to show them that you have ideas and ways that you can earn your own money without depending on business. आपके पेरेंट्स आपको बिजनेस में फोर्स इसलिए 2 रीजन से कर रहे होंगे. 1, फैमिली बिजनेस है तो लेगेसी कंटिन्यू करनी है. दूसरी चीज कि दे डोंट थिंक कि यू कैन फाइनेंशियली सपोर्ट योरसेल्फ. अ बिजनेस इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको ऐसे सपोर्ट करना होगा अपने आप को. सो शो देम कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो एंड मिल जाएगा आपको. इफ यू शो देम कि भाई you can support yourself financially, it's all good. These frequent earthquakes 12 larger than 6.5 are quite eerie. Is there a celestial waking up? हाँ यार सादिक भाई, but from what I've read ना, these are just sliding aftershocks and everything. There's a very good geological reason for this.
बट ठीक है यार, सेलेस्टियल भी आ जाए, अर्थ टूट जाए, खत्म करो यार ये सब। क्या क्या हम फालतू की अपनी सोसाइटी बना दी है। सब लोग दुखी हैं भाई, हैं, सब लोग दुखी हैं, पैसे नहीं हैं, एक्सपेंसिव हो रहा है सब, लोग बंदियों के पीछे भाग रहे, बंदों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप की डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। क्या है, खत्म करो, रीसेट करो सब कुछ। फेवरेट टीम एक्सेप्ट आर्सेनल, रियल मैड्रिड भाई। दक्ष, इफ आर्सेनल had signed was very close would you have won CL by now? नहीं भाई, हम रेलीगेट हो चुके होते हैं। देखो यार, हाइपोथेटिकल्स की सबसे बड़ी बात ये होती है दैट देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। मैं तो कहता हूँ हम क्लब वर्ल्ड कप भी जीतते आते, आप कैसे प्रूव करोगे नहीं जीतते हैं? या मैं कह रहा हूँ हम रेलीगेट होते, आप कैसे प्रूव करोगे हम नहीं होते रेलीगेट? तो मेरे को तो लगता है यार, CR7 किसी भी टीम में जाता, वो टीम तो जीतती है UCL 100%। बट हाइपोथेटिकल है यार, कुछ भी बना सकते हो। अगर मेसी ब्रिटिश होता तो कौन से क्लब में जाता, मेरे को क्या पता दोस्त। I have many sent polls on new owners of Man United. More than 87 people on average want Qatar, and 3 lakh people included in that polls. But English media is biased towards Ratcliffe. Racist साले मादरचोद। जब आप यूरोपियन कंट्री में आओगे ना, अम, तो जब यूरोपियन कंट्री में आओगे, आपको ना उनकी थिंकिंग के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। And you might think from India, and I think because I have a unique insight into how European societies think and how Indians also think, the idea of racism could be whatever they are covering, it can be interpreted as racism. But to be honest दोस्तों, उनका वैल्यू सिस्टम ही अलग है। हम जो कहते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उनका आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी डिफरेंट। That is why you see all this biased media coverage. But I don't think it's inherently and deliberately racist. That's all. Maybe there is some implied racism or internalized racism जो मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। Possible है कि सारी coverage racist हो। But I think there's also a thing about क्या नाम है इसका, वैल्यू सिस्टम से। भाई प्लीज फुटबॉल क्वेश्चंस मत पूछो। स्टैटिस्टिक्स में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पढ़ो यार, आपने आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तुझे दोस्त। एंड स्टैट्स जैसी चीज आप हवा में तो नहीं कर सकते। तो इफ यू वांट टू जस्ट पास द एग्जाम, गेट अ हैंड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स, सी कि क्या क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं आपके मैक्सिमम मार्कर्स में, उन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बस। बाकी भगवान के ऊपर है कि आपके सारे मार्क सारे वही क्वेश्चन आएंगे। डू यू गेट गर्ल्स? आई डोंट नीड गर्ल्स, आई हैव अ वेरी स्टेबल गर्लफ्रेंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। सो या गाइस, देखो आप स्पैम करोगे, सबके क्वेश्चंस डूब जाएंगे। सो इट इज व्हाट इट इज। The discussion on human rights is straight up, yeah, yeah. You can't get into the ethics of ownership. If anything, history teaches me, all know what happened. Exactly. All I'm saying is, it's human rights, their version of human rights is different and it's guided by their idea of how they've lived their life. But अब क्या ही करें? How is France for masters in finance? Very good if you go to HEC. I don't know about other schools, but काफी लोगों मैं जानता हूँ जो फ्रांस गए हैं, they've been really good. So yeah. No, I didn't do my masters in Ireland. I did my masters in India. कौन सी कंट्री में हो बताओ भाई, समर्थ को यार, समर्थ आया है, समर्थ को कोई बताओ। Daksh, have you dated so many girls? So what is your secret? There is no secret. Sometimes it's a lot about luck. Sometimes it's about how you talk to them. Sometimes it's about just chance, man. I remember I met one of my girlfriends in a club that I really didn't want to join, but I reluctantly joined. एक सोसाइटी में ज्वाइन किया था, वहां पे वो मिल गई थी। We just talked, asked her out for dinner. I didn't even intend to date her. अच्छी लगी थी, I just wanted to know her, got to know her, became close, dated. That's pretty much it. If you talk to people with a hidden intent ना, काफी झलक के दिख जाता है। Just I'll tell you the biggest secret to not to getting girls is, well, number one, don't be cheap. Don't be a crass human and treat them with respect. बहुत लोग एंड्रयू टेट के बारे में भी पूछ रहे थे भाई। ट्रस्ट मी, अगर आपको सेक्सलेस एंड आपको girl, you don't want a girl in your life, follow his principles, because his principles will not translate well into Indian society. आप कुछ भी कर लो दोस्तों, his idea of how men and women should be, his idea of what women are, नहीं चलेगा इंडिया में। एंड यू कीप फॉलोइंग हिम। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 24-25 साल के हो जाओगे, देन यू विल रियलाइज अरे ये, ना अगर आप 24-25 साल के होके भी कर रहे हो तो आप 28-30 साल के हो जाओगे, देन यू रियलाइज अरे ये प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है। So try, man.
But just don't be a creep, don't be a bad person, treat them with respect and don't have any hidden intent. हाँ, हाँ, बहुत बहुत अब्रिज्ड वर्जन्स होते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लिखो भगवद गीता इंग्लिश, क्योंकि भगवद गीता इज़ मेंट टू बी एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपको काफ़ी लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशंस मिलेंगी। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल यूज्ड टू बी इंग्लिश एंड हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश, हिस्ट्री, केमिस्ट्री। एक बात गांठ बांध लो, एज मच एज इट इज बोरिंग एंड थ्री इडियट्स का रैंचो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राइंडिंग इट आउट इज द ओनली प्रूव। हाँ भाई, इफ यू इफ देखो यार, लाइफ में कभी ना लाइफ विल एक्सट्रैक्ट मेहनत आउट ऑफ यू। If you do mehnat in your school, college becomes easier and then life so on becomes easier. If you grind it out in college, then post college job will be easier. If you don't grind it out in any of these places, then rest of your life becomes a grind, right? So देखो, life will extract mehnat and grinding out of you. When you do it, just do it. Um, annotate is fake, I guess वो सारे मजे ले रही है। हाँ यार, बंदे ने क्या है, whatever. Do you believe in karma theory and rebirths? I believe in the idea of karma. I think if you do bad, you end up attracting negative energy and bad things. Reincarnation, I don't know, man. There are so many stories which make me believe that there is reincarnation, but so many stories which just prove it's a myth. So I just think, yeah. How is your organic? भाई बहुत बढ़िया थी मेरी organic. Best. I was the best at organic. How can I get better at it? Just practice, dude. There are thankfully Indian school system में organic में, अब मुझे पता नहीं अब क्या system है, but if you want to do well in organic, चाट लो यार book को. Generally, there's only a fixed number of things and the fixed number of compounds you can make. Um, अपनी ये सारी shifting fufting करके कर लो. Genuinely, brute force it, just go through every possible permutation combination, find any possible question that you can find, book में हो, online हो, test series में हो, together with में हो, किसी आपके उसमें भी हो. I know organic is a nightmare, dude, it's not easy. मेरे लिए बहुत easy हो गई थी, क्योंकि मेरी मॉम बहुत अच्छी थी and मेरे से जब नहीं हुई थी, मेरी मॉम ने मेरे को अच्छे से सिखा दिया था. So just do it all, man. Find any possible question for organic, and the more questions you do, the more confidence will come. Because आप पहले क्वेश्चन करोगे, मुश्किल अगर नहीं आया, मैं कहता हूँ आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 में से आपको सिर्फ 20 आए, बहुत बुरा लगेगा, बट आप 50 और करो. मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट 50 में आप 30 कर लोगे एटलीस्ट, और उसके नेक्स्ट 50 में आप शायद से और कर लो. द थिंग इज, ये इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बिकॉज देयर इज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कैन आस्क इन ऑर्गेनिक. एंड जितने आपकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी, आउट ऑफ 50 पहले 20, फिर 30, फिर 45, आप क्वेश्चन से ही नहीं डरोगे भाई. इफ यू जस्ट ब्रूट फोर्स इट, इट्स देयर. I was shit at maths, so I have really zero advice for maths. I just made sure I passed all the time. That's it. Learning and remembering wrong answers. Well, अगर आप हिस्ट्री जैसी चीज की बात कर रहे हो ना, ट्राई टू राइट द इंटायर आंसर, एक बार पूरा कॉपी कर लो, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि इसमें बात क्या हुई है, कि देख हम ये व्हाट इज द फ्लो ऑफ माय आंसर. आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी long term way, but this is how I learn. I see a paragraph, I see what the flow is, what they're talking about. अगर आप बता रहे हो कि let's say what were the consequences of, let's say, the 1857 revolution on the independence movement of India. Okay, well then you see कि copy करा है मैंने आंसर. अच्छा, इसमें पहले बात करिए origin of the revolution. अच्छा, इसमें बात करिए this was the geographical location जहाँ पे सबसे पहले revolution start हुआ था. अच्छा, this was the next location. अच्छा, ये revolution इस वजह से spend हुआ, forward हुआ था. अच्छा, मजे की बात तो भाई 5वें पॉइंट में ही है कि रेवोल्यूशन ने ये किया था. सो दैट इज हाउ यू बिल्ड द आंसर. यू कॉपी इट, यू अंडरस्टैंड इट एंड यू ट्राई टू रीराइट इट इन योर ओन वे. नाउ इफ यू वांट टू राइट इट एग्जैक्ट, फिर तो आप बस 6 बार लिख दो, आपको रट ही जाएगा. ठीक है, दिन में आप 6 बार लिखोगे, आपको रट जाएगा. एंड आप हर 3 दिन में लिखोगे. इसको कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट इट वाज कॉल्ड, इंटरवल लर्निंग और समथिंग, कि अगर आप सही इंटरवल्स में चीज रिकॉल करोगे, आपको बहुत बढ़िया हो जाता है. ओके. हाउ डिफरेंट इज वेस्टर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. आई टेल यू वन थिंग. जब मैं स्टैनफोर्ड में था, आई वाज एट स्टैनफोर्ड फॉर आई थिंक हाफ ईयर और ईयर, उसके हिसाब दैट काइंड ऑफ, आई थिंक 2 semesters.
सो स्टैनफोर्ड में द बेस्ट थिंग विच वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी वाज सुदीप्त, एग्जाम्स के टाइम इन्विजिलेटर नहीं बैठता था. देयर वाज नो इन्विजिलेटर. इन्विजिलेटर्स वर नॉट अलाउड टू बी इन द रूम. बंदा आता था, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर दिया, ही वॉक आउट, एंड इट्स जस्ट यू एंड द स्टूडेंट्स. क्योंकि स्टैनफोर्ड में द आइडिया ऑफ एथिकल प्रैक्टिस वाज सो इंग्रेन्ड कि कोई चीट करता नहीं था. ना मेरे को, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई प्योर रहेगा, कुछ लोग चीट नहीं करेंगे, बट आप अकेले उस रूम ऑफ 40 बच्चों में, यू आर द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू चीट. शर्म आती है. इन इंडिया इट्स नॉट पॉसिबल, आई नो भाई, मैं देख रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, एथिक्स उन्होंने इतना अपने एजुकेशन सिस्टम में भरा हुआ है. प्लेजरिज्म नहीं, ये नहीं, वो नहीं, काफ़ी स्ट्रिक्ट लिमिट्स होती हैं. दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. The second thing over here that in Ireland and in European is that a lot of what they teach, they also make sure कि इसका impact क्या है. Now school system में possible शायद से नहीं हो, मैं college education की ही बात कर रहा हूँ. कॉलेज एजुकेशन में दे, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसका एक्चुअल सोसाइटी में यूज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या है, वट एवर इट इज़, मतलब बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस बहुत होती हैं. तो ऑल ऑफ दैट स्टफ. आज सब मॉड्स मॉड्स इग्नोर हो रहे हैं. मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, मेरे को नहीं दिखता है स्क्रीन पे कि कौन मॉड है या नहीं. तो और जितनी तेज चैट जा रही है, मुझे लग रहा है स्लो मोड मेरे को और बढ़ाना पड़ेगा. डिड यू एवर फाइंड न्यूमोनिक्स हेल्पफुल? आई वॉज नेवर गुड एट न्यूमोनिक्स यार, बट कुछ लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता था. टॉप 3 most good looking footballers with rank. I think number 1 is Giroud. Number 2 is Trossard. Trossard looks really good. And number 3 is Hector Bellerin. But Giroud is the most handsome. Okay, slow mode बढ़ाओ. People say slow mode बढ़ाया जाएगा. Oh no. Wait. Content. Live. Here. Customization. एंड स्लो मोड हम बढ़ा के अब 45 सेकंड्स कर रहे हैं, बिकॉज स्पैमिंग बहुत हो रही है. 45 नहीं, इनफैक्ट 60 सेकंड्स कर रहे हैं. अब आप लोग थोड़ा चिल हो जाइए. हाँ, बस मैं इसलिए आंसर नहीं करता. क्रूज का क्या हुआ, हैवर्ट्स का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या. अरे भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस मैं पूछ लूं और आपका मुझे दिशा पटानी है, मैं पूछूं व्हाट अबाउट दिस पर्सन, तो आप क्या बोलोगे यार. सबकी अपनी अपनी इसमें चॉइसेस होती है, इसलिए मैं आंसर नहीं करना चाहता था. um, ये फिर शुरू हो गए वरान लोग सॉसम. हाउ टू फ्यूल बॉडी, ईट फूड माय फ्रेंड. फूड इज द बेस्ट फ्यूल. और क्या, और तो कुछ सीक्रेट है नहीं. अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, फ्यूल होता रहेगी बॉडी. इंजन की तरह है आपकी बॉडी. अच्छा सा उसमें तेल डालोगे, अच्छे से उसको यूज करोगे, एफिशिएंटली यूज होता रहेगा. Why do you think people doesn't like history? By the way, history is my favorite also. I think people don't like it because of the fact कि they don't understand why history is important. सबसे पहले people think ये तो हो चुका है, इसको हम सीख के क्या करेंगे. दूसरी चीज, उसके आंसर्स काफी लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो या, do you watch anime? Yes, I watch anime. Anime is um एनिमे में वो बेसिक सारे अपने, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, ब्लू लॉक, विनलैंड सागा भी देखना है मेरे को. हाउ टू गेन वेट. प्रोटीन भरो भाई अपने अंदर, और क्या. प्रोटीन भरो और बॉडी बिल्डिंग करो, और क्या है. ये फुटबॉल क्वेश्चंस नहीं कर रहा मैं आंसर दोस्त. आलू ले लो. यस, आई यूज पोमोडोरो अ लॉट. आई स्टार्टेड विद 25-5, देन आई मूव टू 50-10. आयरिश एक्सेंट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यस, यस, बट आदत लग जाती है. मैं वही कह रहा हूँ, आपका ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है, आपको पता भी नहीं है. कैन यू टॉक 1 minute इन आयरिश? नो, आई डोंट नो गेलिक, सो आई कांट रियली टॉक 1 minute. आप 1 minute क्या, मैं तो आपसे 3 सेकंड भी गेलिक में बात नहीं कर सकता. विच पोजिशन डू यू प्ले? आई यूज टू प्ले CDM और विंग when I used to be young. Then I broke my leg twice. So Arsene Wenger is the most handsome. Yes. Rate मैंने नहीं देखा. I haven't watched it. It looks very interesting, but I don't know man. मैं घुस नहीं पाया उसमें. हॉलोकॉस्ट के बारे में बताओ. उफ, हॉलोकॉस्ट के बारे में क्या बताएं आपको यार. हॉलोकॉस्ट was probably the worst thing that ever happened. एक सेकंड यार. Probably the worst thing that ever happened to humanity.
um, एक बंदा, एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा। एक बंदा अपनी हेट की वजह से, अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, हिज आइडिया ऑफ कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज अ प्योर ह्यूमन एंड एन इम्प्योर ह्यूमन, killed, did the largest massacre for, क्या ही बताएं यार दोस्तों। उस पे भी करेंगे किसी दिन हॉलोकॉस्ट स्ट्रीम। अरे यार नाम से इतना बुरा लगता है। नहीं, विल डू अ stream, will look at important events in history, your world wars and your whatever it is the IRA still active? Ha, people won't say it out loud, but yes. Yeah, they talk very, especially old people talk a lot about IRA. I've met so many people who talk about the IRA. Guinness भाई, Guinness एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में कुछ ओपिनियन? यस, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आई वुड से मिड गैलेक्सी, नो रिज, मिड सिस्टम्स, एंड मिड ब्लैक होल भाई, वेरी वेरी मिड गैलेक्सी, क्या ही बताएं पुदन। देयर इज एन एंटायर डिसिप्लिन मेरे दोस्त, just called international political economy. Read that. um, करो परो, पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में यू जस्ट टाइप, बताऊं क्या है, आपको कुछ भी टॉपिक पढ़ना हो, देर आर टू गूगल टर्म्स यू शुड ऑलवेज सर्च: इंट्रोडक्शन टू टॉपिक एंड book. You'll find a list of books, start reading any one of them. And second, international political economy for dummies, yeah, something for dummies, and you will find a book. That's it. What is IRA? It is the, क्या था, Irish Republican Army. Irish Republican Army, yes. Irish Republican Army एक sort of separatist faction थी, और separatist क्या, unionist faction है, that wants to rejoin अखंड Ireland, Northern Ireland and actual Ireland को. They have always been resisting against the British because British ने Ireland को दो हिस्सों में कर दिया था. Very very familiar, right? So yeah. Have you heard about the Anunnaki, the so-called gods or creators of us? No, not really. This sounds very interesting. Anunnaki. Okay, I'll think about it. Thank you so much, yaar, Denver. But I'm so sorry. No. What does redundancy mean? Depends on various contexts, but in general, in pure English, redundancy means something that is extra but unneeded. You can exist without it. Now, in other contexts, it means a backup. And in other networking contexts, it means something else. So network redundancy, security redundancy, router redundancy, ये बहुत सारी चीजें होती है, बट redundancy basically means, अब देखो, ये सब मेरे से मत पूछो, गूगल पे डालो redundancy, आपको आदत हो। Honestly बताऊं guys, the best skill you can have is how to Google effectively, and I can tell you, YouTube पे videos हैं on how to Google better. एंड ये सब वो नहीं कर रहा कि साइट कोलन और आप ये करो या फिर माइनस रिजल्ट्स करो, ये सब वो नहीं। द आइडिया अबाउट हाउ टू गूगल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इज द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न। यार सोचो यार, आप लोग अपने आप को कभी ऐसा ये ख्याल आया आप लोगों के पास, आपसे पहले पूरी ह्यूमैनिटी ने इतनी मेहनत से सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, उसको दो जगह डाल दिया है। नंबर वन इज लाइब्रेरी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मुझसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, आपको लाइब्रेरी में भी आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, फास्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट बेटर आंसर मिलेगा। नंबर टू इज द इंटरनेट। नाउ इंटरनेट पे अब बहुत सारा कंटेंट आ गया, सब अपने अपने एजेंडा पुश करते रहते हैं, ये सब वो सब, बट अगर आप काफी पढ़ोगे, यू विल फाइंड one of those things. Have you tried chat gpt better than google? Chat gpt के दो इश्यूज हैं, काफी इश्यूज हैं इनफैक्ट। नंबर वन इज ऑफ कोर्स 2021 तक लिमिटेड है। नंबर टू इज, अगर आप नंबर टू उस पर काफी ऑलरेडी बायसेस हैं, एंड आई डोंट लाइक एआई विद बायसेस, बिकॉज अगर आप even if it is biased to your जो preferred ideology, it can be very easy to make an AI which is biased against your preferred ideology. So using that as a knowledge center is bad. Third, if you ask it to talk about books, knowledge, and all of these things, one, it gives very generic advice. Two, it makes up sources for any advice or any information it provides to you. So no, I like chat gpt, but I don't depend on my life for it. Simple as that.
आप दिखने में बहुत शांत काम लगते हो, आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, खुश रहो। थैंक यू सो मच अराकुल, थैंक्स सो मच। फेवरेट यूट्यूबर्स यूज्ड टू बी प्यूडीपाई एंड एवरीथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट अब मैं यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। आई टेल यू, आई लाइक गोल्ड ब्रिज, आई लाइक लॉरेंस मैकेना। मैं सिर्फ 2-3 यूट्यूबर्स ही देखता हूँ यार। चैट जीपीटी इज द वे, आई थिंक बिंग एआई विल बी बेटर। Extrovert or introvert? Very introverted, very introverted. I used to read a lot before job, but after that, to shift place where it isn't so friendly, it's hampered my confidence. Reading is good, but to find company, I spend a lot of time on YouTube. Vishal, you can do two things. There are very dedicated YouTube videos which are just YouTube live for music. It's like literally a radio which is playing calming music, or it's stimulating a crowd, or it's simulating a cafe. Stimulating, not simulating. It's simulating a cafe where you feel that you're around people, and you can just talk to people in the chat if you want beach, but just keep reading. It'll give you a really nice feel. And it takes time, man. And I'm telling you, if you've read before, you know the effects and the positives of reading. So I would say just continue back on that, yeah. Do you think Western supremacy will end in the 21st century? Very difficult. Possible, but very difficult. Just like I said, for Man United के title chances, it's very possible, very possible, but it's also very difficult. How to use oil and ghee in a healthy way? देखो यार, एक क्वेश्चन को 3 बार स्पैम मत करो. Okay, how to use oil and ghee in a, I mean, I genuinely don't know. Goldbridge, seriously, I like his non-United opinions, man. His non-United general football opinions are really interesting. दक्ष भाई चाय पी के आया 10 मिनट में. आराम से यार, आराम से. मुझे मुझे बताने की थोड़ी जरूरत है. Feuds to Goldbridge was some spec because my interest really fluctuated from video games to football. I am an introverted. Daksh, did you prepare? Yes, I did prepare for UPSC. नहीं हुआ मेरा UPSC में. Do I watch Dhruv Rathi? I used to. I stopped. I started sourcing information for myself because I don't know, man. I don't mind consuming second-hand information, but I trust first-hand information most likely. Favorite ISL team? I generally haven't been following ISL for 6-7 years now, so अब तो बिल्कुल भी नहीं. क्या क्या हटा रहे हो तुम डेकेड और 2 में? Socialist elements. I know liberalization was done very late to protect Indian market from, but we still hold socialist values in our constitution. No society can sustain. Without it, we will remove socialism. भाई सोशलिज्म तो हमारी कंट्री से कभी नाम नाम से हट जाएगा, वरना तो कभी हटेगा ही नहीं. बिकॉज सोशलिज्म, यू विल नीड सोशलिस्ट पॉलिसीज टू विन इलेक्शंस. आपके वोटर्स ही इतने सारे usually lower middle class people, and if you don't give them subsidies and insurance and food and jobs, how do you plan to win elections? ये तो गलत आपका वो है interpretation. Stopped watching Goldbridge, it becomes too toxic for me. हाँ, yeah, of course. Favorite, Daksh bhai, your favorite clothing brand and some dressing tips. Ooh, very interesting. My favorite clothing brand, there is this brand in Ireland called Ramus Uomo. I like their clothes. Very expensive, but very nice. All Saints. All Saints अच्छी है. Boohoo Man is good for cheap clothes, but cheap but decent quality. इंडिया में करना है तो आप मार्क्स एंड स्पेंसर्स एंड H&M जा सकते हो. Those are really good. Uniqlo, yes, Uniqlo बहुत बढ़िया भाई. Uniqlo. Yes, no society can sustain itself. Okay. Daksh bhai हो गया. Just want to know and how some dressing tips. यार बहुत ड्रेसिंग टिप्स के आपको फैशन चैनल्स मिल जाएंगे, आप उन्हीं को ही देख लो. आपको ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती है. आप सिर्फ यूट्यूब पे लिख लो मिनिमलिस्ट वार्डरोब, आपको पता चल जाएगा. आपको लिटरली छः छः टी शर्ट 6 पैंटें टाइप्स चाहिए होती है, और उससे आप इतनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. सब बढ़िया हो जाएगा. Just want to know how much football you consume and how much we should. Yeah, that's up to you, man. As long as it's not interfering with the rest of your life and your rest of the day, you can consume as much as you want. But you make sure you're achieving your long-term and short-term goals. And जब तक आप लोग वो कर रहे हो, then you can just keep on doing it, I guess. Uniqlo and H&M, yes. Uniqlo is very nice. I really like Uniqlo.
क्या है? It's so good. No, 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 no. Yeah. Look, man, you will have to find your ways. Even if you're introverted, you don't like going out values. Yeah. Yeah, you cannot sustain without socialist values. True. Um, कोचिंग क्लासेस नहीं, आई डिड नॉट। मैंने स्टार्टिंग खुद करा था, बट देन टुवर्ड्स द मिडल मैंने वो, कौन है यार, रोमन सैनी वाली, अन अकेडमी ली थी मैंने, बट ठीक है यार। पालिका बाजार, दक्ष ओनली वेयर्स एलवी, नहीं यार, दिस इज, व्हाट इज दिस इज नॉर्थ फेस, आपको दिख रहा होगा। नॉर्थ फेस ऑल्सो डिसेंट यार। ग्रीन कार्ड क्या होता है? इट्स योर सॉर्ट ऑफ परमिट टू स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स एज एन ओवरसीज सिटीजन। इट्स योर pathway to citizenship. You are granted all rights except voting, if I'm not mistaken. YouTuber do you like in Indian football community? I like everyone यार, I generally don't have a favorite. I like मानस निधि बिकॉज उनकी वाइब मुझसे मिलती है। दिव्यांश के भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा है। यश का एनालिसिस बहुत अच्छा है। मोहक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसकी एनर्जी मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है, बट हिज पैशन इज अनराइवल्ड। बाबा के एनालिसिस ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं। मुक्तेश की बकचोदी बहुत अच्छी लगती है। तो यार कितने लोग आप डाल दोगे? टीसीएसबी की बकचोदी अलग ही लेवल की चलती रहती है। अब मैंने किसी को मिस कर दिया, बोलोगे दक्ष आपको ये अच्छा नहीं लगता? मेरे को सब अच्छे लगते हैं। Why pragmatic football has had more success? It's not that. I think it's all cyclical, man. Sometimes the pragmatic football gets you success. Sometimes attacking football gets you success. I just think it's like offense defense evolve होता रहता है। डिफेंस इवॉल्व होगा, उस डिफेंस को ब्रेक करने के लिए ऑफेंस इवॉल्व होगा, उस ऑफेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए और डिफेंस इवॉल्व होगा। तो वही होता है। ओके, I am going to book fair this Sunday. Can you suggest me some good non-fiction books? You know what, my friend Nitin? If you go to a book fair, no, you can ask the guy. जो लोग usually ये सब stalls रखते हैं ना, sometimes they are very knowledgeable about the books. They will ask you आपके interest क्या है, आपको किस type की non-fiction में interest है। आपको जैसे आप कह रहे हो Homo sapiens आपने पढ़ी है, आपको उसमें interest है, आपको futurism में interest है, आपको genetic cloning में interest है, आपको war में interest है। So they will suggest you things based on that. So all of those things. What drives you to live every day? Oh damn. Nothing, man. I think I have a lot to look forward to in life. I am doing something which I really love to study. I am in a job which is paying me decently to sustain myself. I am making videos and I am interacting with people who want to hear me and want to talk to me. So that is really nice. And uske baad, in general, I think I am in a happy place in my life. Of course, सब चीज़ खुश नहीं है. There are things which I really want to improve in life. But largely मेरे को हिम्मत हो जाती है उठने की। कभी-कभी when you're stuck in a way in life where fuck man, मंडे आ गया, काम पे जाना है, ये करना है, मेरे को तो ये अच्छा भी नहीं लगता, फिर खत्म, फिर ये, फिर वो। देखो, I am telling you, I myself had a pretty bad depressive episode a few days ago. It's not every day that you're gonna get. Some days and most days, I think I wake up pretty fine. Just because I think I'm in a position, I'm in a place, I'm doing something which I really like. That's enough motivation for me to get up and work out. Okay. Which footballing position do you like? I like the wingers, man. I love wingers. How is Australia for PG and work? To be honest, I can't tell you anymore, man. बहुत कुछ change हो रहा है Australia में. In Australia, you won't find work in your field most of the times. They will every country will prefer giving their own nationals jobs over foreigners. Okay, I'm thinking of an app for all creators around YouTube where there will be creators, viewers chatting with creators, and also there will be channel promotion. Dakshopi. Thank you so much, Gaurav. And sure, build it, man. Nobody should stop you building anything. That's really good. Chalo, I'm leaving. Have to go for a haircut. Best of luck. Aapka haircut अच्छा जाए. Nice discussion. Indian Scouts will see you later. Bye, Daksh bhai. Bye, bye. Of course. I have a question. What to do if you don't like what you do? It's primarily because of the place I'm living, the area of the job I'm in. Even if I get transferred, it'll still be rule. Very difficult question, yeah, Vishal. Pivoting a career is very difficult. It's also a very long process. For example, you want to do something in development. Now, what do you not like about your job? Is it just the fact that no matter how much money you earn in this job, you will never like it? Or is it the fact that the money is not good? If the money is not good, um, I really don't know. I haven't really done that sort of a career progression. If it's something you don't really like in principle,
You have to figure out what you like in principle, see what the requirements are, build up your, आप 9 to 6 जॉब कर रहे हो, आपको 7 to 9 अपने स्किल्स बिल्डअप करने पड़ेंगे ताकि आप एक दिन दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करके पिवट कर जाओ. मुश्किल है, टाइम लगेगा, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं. ऐसे ही बनता है दोस्त. मेरे दिन सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 12 बजे खत्म होते हैं. मेरे को जेन्युइनली इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आई कैन क्विट यूट्यूब टुडे, आई कैन क्विट माई जॉब, मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एंड आई कैन जस्ट डू माई PhD एंड प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे. मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बट I like to push myself. I like to challenge myself. I want to make myself happier, successful, whatever in anything I like. मेरे को हमेशा से फुटबॉल के बारे में बात करनी थी, which is why I am here doing this. मेरे को नहीं करने की जरूरत इतनी मेहनत, but it is what it is. कौन कह रहा था मेरा क्वेश्चन ले लो, you need insight. ऋत्विक, क्वेश्चन वापस भेज दे दोस्त. I'll take it this time. Nolan or MCU, which genre you prefer? Oof. MCU's become mockery of itself, man. I don't like MCU anymore, so I'll take Nolan. Ian, right, very optimistic, because that's the way it is supposed to be, man. If you are always sad, depressed, not, I'm not saying you, it's a choice, but I'm saying if you're always sad, negative, reactionary, toxic, you'll never enjoy anything in life, because everything will have a dip sometime in the future. Yeah. Strong decision. In principle, I like it, but the area and the places I'll get this job and the atmosphere that you don't like, man, then that sucks. It's like saying I like working on an oil rig, but I hate the fact that most oil rigs are in the ocean and I hate water. Um, Figure out how you can stay adjacent to the job and maybe work in a city. So, for example, you can be a consultant to people who want to get into this field. I don't know. You can be in and around the field, consult other people, become a counselor or something. I don't know what your job is exactly, so I can't really say. बट यार अगर ये इशू है तो तुम्हें कुछ एडजेसेंट ढूंढना पड़ेगा जो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है बट आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कहीं और एटमॉस्फेयर में जाने की. फील बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड ह्यूमरस इज वे ऑफ लाइफ फॉर मी. गुड मैन, इट्स द बेस्ट वे टू लिव. गेम ऑफ थ्रोन्स और फ्रेंड्स, डिपेंड्स यार. फ्रेंड्स क्या अलग ही जॉनर है और गेम ऑफ थ्रोन्स अलग ही जॉनर है. डू यू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? आई प्ले द गिटार, आई प्ले अ लिटिल बिट ऑफ द पियानो एंड आई प्ले द ड्रम्स. आई प्ले 3. वेरी लिटिल पियानो दो. फ्लैश का ट्रेलर गिव्स मी होप फॉर DCU. फेयर इनफ, मैंने नहीं देखा. अभी तो तुम्हें फुटबॉल की बात नहीं करनी थी. अरे यार, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो यार? गेमिंग एज JML, रिलैक्स रिलैक्स. अरे ऋत्विक, मैं पकड़ता हूँ, डोंट वरी. इसके बाद कहाँ है तेरा क्वेश्चन यार? सुदीप्त 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 सुदीप्त, यू मिस्ड इट अगेन ब्रो. यार ऋत्विक, चलो ऋत्विक का क्वेश्चन देखते हैं. बहुत कह रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया यू वोंट फाइंड वर्क, प्रैग्मेटिक फुटबॉल इज सिंपल. नहीं, ये तो वरुण है, सॉरी. ऋत्विक के भाई कहाँ है क्वेश्चन? ऋत्विक यार नहीं आ रहा तेरा क्वेश्चन यार, सॉरी डूड. You've heard about Think About campaign? No, I haven't. Have you watched WWE? I started watching it again. Uh, Only till season 4. अच्छा, Game of Thrones की बात कर रहे हो. Any tips to use GarageBand like a pro? I'm also a guitarist, piano. I'm sorry, dude, but you can find it better um, on YouTube, to be honest. Your view on character building principles and mentality. It's a very wide question. If you're a little specific, I can probably help. Daksh bhai, why people don't talk about Cruyff? Johan Cruyff. I don't know, because most people weren't born to see Cruyff play. You've just seen the highlights and you've not seen what he's done or his impact on the game. So I think it becomes, yeah. But then you'll have to wait again. So, ठीक है. दक्ष भाई हो गया. This is YouTube. Yes, this is YouTube. तो आप गुस्सा मत हो ना, वही तो कह रहा हूँ. Sometimes I'll answer, but आप मेसी रोनाल्डो हर बार पूछोगे तो नहीं होगा. Watched Outer Banks series season 3? No, I haven't. No problem. I'll remember in case it miss. Are you Kothi Bangle wala? Yes, Kothi Bangla check. Yes, Kothi Bangla check. Exactly. I think many people are Kothi Bangla wala. They just don't play it out like that. A lot of people are Kothi Bangla walas. Okay, chalo. Thankfully, chat itni kam ho gayi hai that we can have a nice, calm discussion now. It's not going to be 100 people asking 100 questions. What you got to know about Ireland? It's a very peaceful country. It's a lot calm. It's not a big
बिग कंट्री टाइप्स, डब्लिन उतना बिग सिटी टाइप्स नहीं है. um, oh, you're a government teacher, you say. I'll answer Gaurav's question and I'll get to Vishal. So I'll say कि yeah, it's not a big city like London. इतने हाई राइजेस नहीं है, पीसफुल है, नेचर पे बहुत इंपॉर्टेंस है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेकार है, हॉस्पिटल्स बहुत ही बेकार हैं. So yeah, government teacher. Yeah, government teachers will do it. I mean, it depends, yaar. I've heard of people, not many to be fair, but I've heard of people who've moved from village government teaching to end up working in KVs and other government schools in cities. Now, dekh liya Vishal, if you have the skill set to move from a village to a city, then fair enough. Otherwise, you can get into teacher training. There are very good courses on teacher training. I don't know कितने लोग teacher training actually लेते हैं, but you can eventually focus on, if you have teaching experience, move to things like becoming a professor who teaches other people who are taking B.Eds, become a professor then. So I don't know what's the skill progression. It's not an industry I'm very familiar with, तो मैं बता नहीं सकता दोस्त. Starting to apply your technique from today by leaving my headphone addiction. हाँ, you keeping it in your ears. Yes, you always need something in your ear. मेरे साथ भी होता था. Daksh bhai, watching goes down in chill streams. I think the fact is यार देखो, एक होता है, एक चीज की ना पॉपुलैरिटी बहुत जब बढ़ जाती है तो व्यूअरशिप बहुत बढ़ती है. बट उसके साथ क्या होता है, जो उस चीज को यूनिक बनाता था, दैट इज मैं हर व्यूअर के क्वेश्चन आंसर करता हूँ. आई गिव एप एप क्या कहते हैं, appropriate attention to every comment, and I give a decent amount of time to them as well. That made it popular. But it's impossible to do 250 comments, right? um, this I think 50 to 60 is a sweet spot. 120 बहुत ज़्यादा हो गए थे. The other thing I can do in chill stream is I just talk to myself, talk about myself and don't take questions. But then यही है यार, ये I think sweet spot है. तो this is just sort of market correction जिसको कहते हैं ना, this is viewership correction. Do you watch roasting? नहीं नहीं नहीं, not my favorite genre. MCU is becoming machine. मेरे को नहीं पता भाई. कैसे हो? वेरी गुड यार. हेल्दी फूड पर कैसे आए? लाइक कंप्लीटली थोड़े दिन में चीट हो जाता है तो कैसे छोड़े हो? बी काइंड टू योरसेल्फ मैन. अगर आप 3 दिन में चीट कर रहे हो तो ठीक है. नेक्स्ट डे में अपनी चीटिंग का दिन एक और कम कर दो, एंड देन एक और, एंड देन व्हाटएवर. धीरे-धीरे ही होगा यार. सडनली अगर सबको छोड़ना आसान होता है, एडिक्टिंग हैबिट्स, चाहे मीठा हो, चाहे खाना हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, सब छोड़ देते हैं. द फैक्ट इज दीज आर एडिक्टिव means it's difficult to leave. So be kind to yourself. धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करो. मेरी एक दोस्त थी, she used to smoke 2 packets a day. 2 packs. Fuck. उसने बोला है मुझसे नहीं छोड़ जाना. मैंने बोला तू 2 पैक की जगह just get yourself to 1 pack at least, or 1.5 ही कर ले. Just reduce 3 cigarettes. Reduce 3 cigarettes a week and तू देख. And then अब now she's still smoking but half a pack, which is great. हो गया यार शाश्वत, ये आंसर हो गया. जब रात होती है तब किया करो चिल स्ट्रीम्स. यार देख ना, मैं तो आयरलैंड में हूँ ना. मैं तो 4 बजे, जब तुम लोगों की रात होगी, मैं काम पे होऊंगा. तो पॉसिबल तो नहीं है. अगर अब तुम लोगों को रात के 12 बजे तक चिल स्ट्रीम चाहिए तो वो कर सकते हैं. बट मुझे नहीं लगता लोग करेंगे. गेटिंग मैरिज अर्ली इज बेटर और आफ्टर 30 इज बेटर? आई डोंट थिंक सो मैन. यूर रेडी व्हेन यूर रेडी, बट इफ यू रियली वांट किड्स द अर्लियर इज बेटर, आई वुड से. व्हाट यू स्टडी बताओ भाई कोई CR7 को. Like you don't randomly go to a person. No, I think this is the best. Going to a person and doing it is better. I just think a lot of social anxiety comes from the fact कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि लोग मुझ में interested होंगे. That I think is the root of it. You can obviously go and do your hit and tries and sometimes fail and sometimes succeed. I think putting yourself in the situation is also a really good way. But I think अगर आपको core issue solve करना है कि मैं अपनी English कैसे बताऊं, या फिर how do I mingle with any group, so then you have to have ideas and have to have things to talk about. Like for example, अगर एक group है जो सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा है, I can go and talk to them. But if there is a group which is talking about renewable energy and I don't know anything about renewable energy, then I can't socialize in that group, right? तो वो लोग renewable energy की बात कर रहे हैं, मैं CR7 या मेसी गोट की बात करूं तो बहुत weird लगता है. So if you build up your knowledge base, if you read
a lot, you become a little more versatile in terms of mingling with a wide group of people. That's all I'm saying. रोहित शर्मा या विराट कोहली? देखो यार, मेरे को तो विराट अच्छा लगता है, विराट से बेटर मुझे सचिन लगता है, बस ये हो गया मेरा। क्रिकेट पे मैं और नहीं बोलूंगा। लाइक द स्ट्रीम, यस, लाइक द स्ट्रीम, और इसी बात पे एक ऐड ले लो। योर फैमिली इज मोर ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल? माय फैमिली लव्स क्रिकेट, आई लव फुटबॉल। Daksh bhai, let's play guess the footballers on live stream. Someday we'll do it for the members only. European cities got the point to city planning. I'm in Mumbai, it feels bad. Yeah, dude, yeah, 100%. They are very well made. बताओ भाई, गेमिंग्स का कोई बताओ। बाबा स्ट्रीमिंग करंटली, तो इसलिए शायद ठीक है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे को व्यूइंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। एज लॉन्ग एज आई कैन इंटरेक्ट विद यू गाइस, इट्स ऑल गुड फॉर मी। चिल स्ट्रीम्स आर 100, थैंक यू, हो गया। देखो यश को भी बता दो भाई। बेस्ट टू ईट ड्यूरिंग यूसीएल नाइट्स, बेस्ट थिंग टू ईट ड्यूरिंग यूसीएल नाइट्स, पॉपकॉर्न आई वुड से। पॉपकॉर्न और रोस्टेड पीनट्स, मजे आते हैं। Yeah, first time chill session with you. I'm loving it, Daksh Bhai from the North. Thank you so much, Apodin. You're from Ankit Bhai's channel, if I'm not mistaken. India is best, yes. Maggie, yes. अरे यार, मेरे को मैगी याद दिला दी तुम लोगों ने, हरामियों। I'm also thinking about KVs and higher secondary. By the way, I already did two teaching course, 2 years each. Okay. No, I'm saying you become a tutor of, you become somebody who teaches other people, and that maybe is some way you can get to an educational institute which trains teachers. And if nothing else, yeah, you can also try and look into an HRD ministry position as well. Become a syllabus designer, try to find a job at CBSE, NCRT, all these places. See if you can help. Maybe if there's something there for you, you can probably move to a city as well. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैमिली हो गया। आई एम अ बासा फैन, सो चिल स्ट्रीम इज माय फेवरेट कंटेंट। थैंक यू सो मच। नो ऑफेंस टू योर हार्ड अबाउट फुटबॉल। आई डोंट हैव अ हार्ड अबाउट फुटबॉल, बट आई गेस यू मीन other things. No problem, dost. You and I will not agree on many things on football, and it's completely fine. है ना, मैं वही कह रहा था, ऋत्विक कुछ कर रहा है भाई। डोंट वरी, सिटी विल थ्रैश आरबी लाइप्जिग। ओके। How to get green card? You marry an American, you stay in America for a long time, and how you stay in America is you get a work visa in America, and how you get a work visa is you become very good at your job. आप बहुत टाइम से पूछ रहे हो। ग्रीन कार्ड के दो ही तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल वीजा पे बहुत साल रहो अमेरिका के, और ग्रीन कार्ड की अभी वेटिंग कुछ 80-90 साल है, या ऐसी पता नहीं कितनी वेटिंग है, बहुत बहुत लंबी वेटिंग है। या तो किसी अमेरिकन से शादी कर लो। ऑर्डर पिज्जा? नहीं, डोंट ऑर्डर पिज्जा। Eleni gets extension, yes. Good move from the club. Ever got KT? नहीं, मेरी KT नहीं आई कभी। Some cheap. हाँ, something cheap मंगा लो। I have cleared my CFA level 2, high CGPA, 730 GMAT in process to get job at Big Four, but no extracurricular activities. Do you think I can get into HEC Paris for masters in finance? You can try, man. I'm sure you have some extracurricular activities. If you don't play music, if you don't, just say you're into hiking and running, just say that. And if you feel you're not into hiking and running, and let's say you are a person who is big, who's not really fit, and you can't really say I'm into hiking and running, just say you're into cooking. You can just, I'm not saying lie, but if you're absolutely zero, then I think something should populate your CV. So then just say I'm into cooking and all of that stuff. Nobody can verify. They're not going to ask you to make a dish for them. But they will ask you what's your favorite dish, what your favorite cuisine, blah blah blah. They might ask you that in your interview. Dekh lo yaar. But try and get some extracurriculars, man. Life is so much more than work. जिंदगी आप जियोगे नहीं तो जिंदगी आप काट रहे हो। जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में बहुत फर्क होता है। फेवरेट सिटकॉम? बिग बैंग थ्योरी, अरेस्टेड डेवलपमेंट, and not sitcom. My favorite TV show is South Park. Okay, hold on. क्या text है? You said you'll text. Okay, I'll have to talk to Khush also बीच में. Daksh bhai, who is your idol? Not family, not God, not football. Footballer होना चाहिए। अच्छा, who is my idol? Very good question. Who is my idol? I don't know. That's a very good question. मैंने इस पे या तो ज़्यादा विचार किया नहीं है, या मेरा कोई आइडल है नहीं, which is sounds very unlikely.
थैंक्स मृत्युंजय, आई विल गेट बैक टू यू समटाइम एल्स. मोमोज. मेंबरशिप का ऑप्शन कहाँ है? जब मैं लॉन्च करूंगा उस दिन आ जाएगा यार. ओपिनियन इलीगली लिविंग आफ्टर द वीजा गॉट एक्सपायर्ड. यू इफ यू गेट कॉट, यू आर स्क्रूड एंड डोंट डू इट. इफ यू कांट हैक इट इन अ कंट्री, यू विल नेवर बिकम अ सिटीजन. आप हमेशा डर की जिंदगी जियोगे. दैट्स ऑल आई विल से. Can I reach out to you on Insta for some reason? My message isn't visible. Yeah, man. I saw you just followed me. See if you can. And if you're trolling, I'll block you. Irish guy is superbly hilarious. Hilarious. Okay. Insta username. भाई रुको मैं डाल देता हूँ. कैसे डालना भूल गया मैं. ग्लोबल वॉफल्स है. एक सेकंड में इसको एडिट कर देता हूँ. ट्विटर इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर लो मुझे. एंड या एंड इफ यू सेंड एंड आई डोंट रिस्पॉन्ड टू यू विद इन अ वीक, प्लीज पेशेंट रहना है. मुझे बहुत बहुत डीएम्स आते लोगों से. Best thing in New Zealand is fingernail. Instead of reading books, increasing idea, better to find groups who talk about your interest, saves time. It gets you confidence at least. But like I said, डिपेंड करता है यार. आप ग्रुप ढूंढोगे और फिर एक्टिविटी करोगे, इससे अच्छा तो आप अपने स्किल्स बिल्ड कर लो, ताकि इन केस यू लैंड अप इन अ ग्रुप, देन यू जस्ट हैव समथिंग टू टॉक टू. देख यार, मैं वही कह रहा हूँ. आई डोंट वांट टू बी पॉपुलर एंड जस्ट well known among football groups. I want to be known about people. I want to be engaged in conversation with people who, let's say, talk about international relation or geopolitics, talk about things like space, futurism, all of those things, evolution, whatever. क्योंकि आप ग्रुप चूज नहीं कर सकते ना. आप किसी पार्टी पे गए हो, आप इस आइडिया से जाओगे बस कोई फुटबॉल की बात कर ले मैं घुस जाऊंगा. और you can also do that. You can just be, does anyone watch football here? And then you can start the conversation about football. So yeah, that's a viable idea. Okay. Hello Daksh bhaiya. Hello ZRA. How are you? Sadist. It is global waffles. Yes. अभी मैं नीचे टिकर पे आ रहा है, आप देख लो. How to overcome addiction to watching football Twitter? Limit yourself to one match. One game. Give yourself one game. अगर आप सारे मैचेस देखते हो, उसको हाफ करो सबसे पहले. एंड ट्विटर कर रहे हो तो डिलीट कर दो. मेक इट हार्डर फॉर योर सेल्फ टू एक्सेस ट्विटर. डिलीट ट्विटर फ्रॉम योर फोन. अगर तुम्हें फोन पे ही ट्विटर देखना है, यू हैव टू गो टू twitter.com. फिर अपने जस्ट मेक इट हार्डर फॉर योर सेल्फ टू एक्सेस ट्विटर. twitter.com पे जाओ. डोंट नेवर आस्क से कि नेवर रिमेंबर द पासवर्ड फॉर दिस साइट. वो वाला ऑप्शन कर लो. एवरी टाइम यू हैव टू लॉग इन. वो इतनी मेहनत लगेगी ना आपको ट्विटर एक्सेस करने में. अभी आप क्या करते हो? आप ये फोन खोला, टैप किया, ट्विटर खुल गया, खत्म. मेक इट हार्डर फॉर इट टू एक्सेस ट्विटर. धीरे धीरे आपका हट जाएगा. हम लोग टिकटॉक से क्यों नहीं एडिक्ट हुए? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बंद कर दिया, एक्सेस ही मुश्किल कर दिया. कोई एक्सेस करना चाहे इंडिया से कर सकता था, बट गवर्नमेंट ने इतना मुश्किल बना दिया, सबकी एडिक्शन हट गई टिकटॉक से. सिंपल. ओके, यू आर वेरी अप इन चैट. यस, आई एम वेरी अप इन चैट बिकॉज आई वांट टू गिव adequate attention to people. Okay, get down in the chat says. Okay भाई, मैं आ गया नीचे. चलो. Daksh bhai, have you watched The Crowns? I have not. Why is Bollywood going downhill? There is no originality. There are very difficult experiments. People aren't going to make risky films because they will get banned. Government or censor board will cancel it, or there will be some religious hangama over it. Insta डिस्क्रिप्शन में डाल दो. अरे यार नीचे आ तो रहा टिकर पे. इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. ग्लोबल वॉफल्स है दोस्त. Make some friends in pub. I have, yeah, I mean, if you're asking me, I have friends in pub, but yes, in general you can. भाई गर्ल के लाइफ में आने से लाइक जीएफ बनती है, तो लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन ओपिनियन? वेल, as a positive, you have a, if it's a good partner for you, you have a partner who will, one, keep you motivated, who will also keep you humble, will call out your mistakes and will constantly tell you how to improve and make your life in general better. आपको एक बहुत प्रॉपर लॉयल सपोर्टर मिलता है. प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आप एडिक्वेट टाइम नहीं दोगे तो सिरखपाई होती है. समटाइम्स यू विल नॉट एग्री. एट द एंड ऑफ इट देयर आल्सो अनदर पर्सन एंड आपको भी उनकी नीड्स को अकोमोडेट करना है. सो यू माइट हैव टू डू थिंग्स व्हिच यू नॉट रियली इनटू. अदर टाइम्स यार वही प्रॉब्लम होती है कि एक रिलेशनशिप है, नर्चर करना पड़ता है. कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बट अगर आप टाइम और मेहनत दोगे तो बस बेटर रहेगा. मेरे तो बोर्ड्स है, मंडे से फट रही है, तो यार अब कुछ कर नहीं सकते. अच्छे से पढ़ लो. यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम अनुभव? पढ़ लो. आखिरी 2 दिन में कुछ भी हो जाएगा. मेंबरशिप फी कितनी रखोगे आप? 6,000 रुपये. मजाक करो. पता नहीं, मैंने अभी तक सोचा नहीं.
एक एक्सेसिबल डोमेन होगा विच इज़ गोना बी ओके बट नॉट टू एक्सेसिबल, बिकॉज़ फिर सब ले लेंगे तो सब मेंबर्स होंगे, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो हम अभी हैं। So I want to make it for people who really, really want to be heard. So it's going to be not too pricey, but still not too cheap. Twitter is shit, says Abhijit. यार भाई जॉब नहीं मिल रहा है, कोई ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए कोई साइट पे है तो सजेस्ट कर दो यार। मैं तो नहीं कर सकता ये सब आप लिंक्डइन पे अपने आप करो। अगर वो नहीं हो रहा तो यू जॉइन फाइंड अ रिक्रूटिंग फर्म हु विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब यार। कोई एचआर फर्म ढूंढो आप। ये सब मेरे जनरली ये सब मुझसे नहीं होता। एंड मैं आयरलैंड में बैठ के आपको कैसे सजेस्ट करूं दोस्त। um, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। विच टीम विल विन यार, ये सब मत करो। व्हाट इज योर व्यू ऑन क्रिएशनिज्म वन डॉकिंस? आई लाइक एवोल्यूशनर, आई बिलीव इन एवोल्यूशन। टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन एज यू सेड, या I believe in evolution. I think there is a very replicable, scientifically backed reason for why we are here. The thing is, creationism में इतने डिटेल्स गायब रहते हैं, इतनी चीजें अनएक्सप्लेन्ड रहती हैं। इन फैक्ट ह्यूमैनिटी में, द थिंग इज, अगर आप ह्यूमैनिटी देखो, इतने सारे अननोन्स थे वो धीरे धीरे नोन हो रहे हैं। एंड आई थिंक इफ दैट ट्रेंड कंटिन्यूज यू कांट डिनाई एवोल्यूशनिज्म। अगर आप क्रिएशनिज्म में बिलीव करते हो ठीक है, इट इज कंफर्टिंग, बट इज योर पार्टनर इंडियन? यस शी इज। कैन यू मैनिफेस्ट आर विन अगेंस्ट यू डिड एंड नहीं यार, इसमें मेरे को नहीं दिख रहे तुम जीतते हुए अनफॉर्चुनेटली यार दोस्त। थिंक रियल मैड्रिड आर अ डिफरेंट एनिमल। कोई ना, टिकटॉक का काम रील्स एंड शॉर्ट्स कर रहे हैं ना अब यार, वो तो देखो ना, किसी ने मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी और उसका फायदा उठाया। बट मैं आपको बस ऑन प्रिंसिपल बता रहा हूँ। ऑन प्रिंसिपल द आइडिया इज द हार्डर यू मेक इट टू एक्सेस इट फॉर योर सेल्फ, आप जितनी मेहनत लगाओगे उस पर, द ईजियर इट इज टू लीव इट। तो मैंने जब ट्विटर को, मेरे को अपनी एक एडिक्शन कंट्रोल करनी थी, मैंने ऐप डिलीट कर दी एंड आई जस्ट मेड श्योर दैट कोई पासवर्ड सेव नहीं हो रहा है। एंड हर बार लॉग इन करना ना बहुत बहुत टीडियस लगता था। तो फिर दो चीजें होती थी, या तो आप एक बार लॉग इन करके लंबे टाइम स्क्रॉल कर रहे हो एंड फिर बंद, और अब स्क्रॉल भी कितना ही करोगे यार, आधा घंटा कर लोगे, फिर बंद करो। आप 10 मिनट में आपकी अर्ज नहीं होती वापस करने के लिए, अरे यार फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, एंड फिर आप रात को देखते हो, बस वही होता है। Agent Jorginho clip, yes, that was pure emotion, yeah. Have you listened to any? Yes, मेरा पूरा school breaking Benjamin से निकला है दोस्त। TikTok people move to reels, nothing has changed, still cheap to be an influencer. That's why I like less congested creators. Fair enough, yeah. Why you lack aggression? Because I don't think it really does anything except takes your energy off you, and in the end, I don't think आप कुछ anyway affect कर रहे हो अपने गुस्से से। So, are you learning video editing? No, man. I already know basic editing, and I don't think मेरे पास इतना हाई प्रोडक्शन कंटेंट नहीं है, ना मेरे पास इतना हाई प्रोडक्शन इक्विपमेंट है कि मेरे को इससे ज़्यादा एडिटिंग चाहिए। आई एम स्टिल प्लेइंग अराउंड विद सम एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फिगरिंग आउट कि क्या बेस्ट टेम्पलेट लग सकता है, बट चल रहा है यार, चल रहा है अभी। ये तो शौर्य अपने टैक्टिकोस पे आ गया है, तो आप शौर्य के कमेंट्स पढ़ लीजिए जिसको भी फुटबॉल बात करनी है। अभी पहले जैसी मूवी क्यों नहीं बनती, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, दे दनादन। यार देखो यार, जो अच्छी मूवीज, कॉमेडी मूवीज होती है ना, उनमें थोड़ी तो रिस्की कॉमेडीज होती हैं। कभी कभी दो चीज होती है, वन, कॉमेडी इवॉल्व्स थिंग्स दैट यू वुड फाइंड फनी इन 2005 यू विल नॉट फाइंड फनी हियर। आपके इसमें संता बनता जोक्स हो गए, इसमें आपके बीवी हस्बैंड जोक्स हो गए, कुछ लोगों को अभी भी लगता है बट ज्यादा को नहीं लगता। तो आई जस्ट थिंक कि यही है यार कि समटाइम्स, एक सेकंड यार, इसको बना सकते हैं कुछ, चलो। हाँ, सो कॉमेडी इवॉल्व्स, समटाइम्स यू जस्ट कांट रेप्लिकेट इट, एंड अदर टाइम्स यार ऐसे ही होता है। ओके, कहाँ पे? डू यू स्टे इन? नो, आई डोंट स्टे इन अ लिव इन रिलेशनशिप, बट आई वाज लिविंग with my partner for 2 years. Do you work out? What's your routine? I've stopped working out, man. I have to get back onto it. बना दिया भाई शौर्य। अच्छा जिंक्स कर रहे हो दक्ष भाई, अच्छा बस यही है, या तो मैनिफेस्ट करो या जिंक्स कर दो। Why you look sleepy always? Well, it's difficult to always maintain your energy because at the end of it, you're looking at a screen and मेरे चश्मे मुझे मिल नहीं रहे हैं. So I look sleepy always, man. Um, but it is what it is. पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, and I like to be stimulated constantly.
Right now, I'm looking at myself and looking at the screen of a wall of text and talking to you and trying to be engaging. Otherwise, I am listening to something, I pause, think, write, whatever. There is some amount of stimulation constantly happening in my brain. अगर मुझे कुछ स्टिमुलेटिंग सवाल मिलता है ना तो मैं ऐसे से ओ ऐसे हो जाता हूँ. दैट इज वाई एशेज ऑफ ईडन इज माई फेवरेट ब्रेकिंग बेंजामिन. भाई डायरी ऑफ जेन को तो गोटेड है भाई. डायरी ऑफ जेन तो गोटेड है. हेलो दक्ष भाई. हेलो वैभव. हाउ आर यू मैन. वो डायरेक्टर नहीं है अब प्रियदर्शन. हाँ वो भी है. अब तो कोई और है ना. फरहाद फरहाद करके कोई बंदा है. मुझे याद नहीं. You being able to answer a wide range of questions on any topic in a very understandable way. Sure, you have been reading a lot for it. I read a lot as a kid. I consumed audiobooks a lot. जब मेरे को पढ़ने की मेरी क्षमता नहीं होती थी. But now I'm back to reading. I think reading, even though audiobooks are very fine and they really help, I think reading में जो मुझे flexibility मिलती है ना, तो बस क्या यूट्यूब पे भी लॉग आउट कर दें. डोंट सेव पासवर्ड्स. यू कैन ट्राई. लाइक आई सेड, यू मेक इट एज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेस इट. परफेक्ट हो जाता है. मेरे एक दोस्त ने तो बहुत एक्सट्रीम कर लिया था. उसने क्या किया था, ही वॉज एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम. तो उसने इंस्टाग्राम खोला, पासवर्ड चेंज पे गया, उसने आंख बंद करके ऐसे 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 टाइप कर दिया कुछ पासवर्ड. ठीक है. उसमें कंफर्म वाले के लिए उसने ऊपर वाला कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया. एंड ही फॉरगॉट, मतलब, एंड उसने पासवर्ड सेव नहीं करा एंड देन ही जस्ट कुडंट एक्सेस इंस्टाग्राम. फिर रिकवरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम, वट एवर इट इज, जो आपको रिकवरी की वगैरह चाहिए होते, पॉसिबल है बट मुश्किल है. एंड उसको नहीं करना था तो उसने बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था. अब तो बन गया भाई, तो अब तो तेरे को लेना पड़ेगा. आई वोंट लाइक संता बंता वाज गुड. रिस्पेक्ट, थैंक्स या सरोज. क्रॉल इज ऑल्सो रियली नाइस. गुड लक लिवरपूल, यू विल नीड ऑल द लक भाई. या ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया पे कैशिंग करना है. क्योंकि पैसे उन लोगों के पास है. तो देर आर वेरी फ्यू रिस्की मूवीज. बट ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज अच्छी नहीं बन रही, बट देर आर वेरी गुड हिंदी फिल्म्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग मेड. ओके भाई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ. सबका राइटर बस प्रियदर्शन. भाई मैं एडिटिंग करता हूँ. अगर आपको कुछ एडिटिंग करना हो तो मुझे याद रखना. मेरा एक अकाउंट बैन हो गया था 10.1K पर. अभी दूसरा अकाउंट. अच्छा अच्छा ठीक है. मेरे को एक बार डीएम भेज दे यार. एंड सेंड मी अ लिंक ऑफ योर वर्क. कुछ ना कुछ काम तो करा होगा ना तूने. सो सेंड मी अ लिंक ऑफ योर वर्क, गूगल ड्राइव और वट एवर इट इज. विल सी वट आई कैन डू. I imagine you as a world class manager, world class player. What would you choose? Ooh, I'd be a world class manager, man. I know a lot of people would prefer being a world class player, but I don't know, man. Just orchestrating a victory is very interesting to me. Yes, like, share, and subscribe. यार इसी बात पे एक ad ले लो तुम लोग. People are just questioning demeanor. Come on, not everybody is Jim Carrey. क्या क्या किस बात पे यार ऋषभ. मैंने पढ़ा नहीं. हेलो ब्रो, सिटी फैन है. हेलो वरुण, वेलकम हियर. काफी मिलेगा. इंडिया में कहाँ घर है, कहाँ से हो, फुल नेम बोलो. चलो भाई, क्या है ऐसे, तो मैं आपको बैंक डिटेल्स मांगने लग जाओगे तो हर चीज थोड़ी बोलूंगा मैं. बट आई लिव इन गुड़गांव. आपको यही जानने की जरूरत है. मेरा नाम दक्ष है. आपको यही जानने की जरूरत है. फीफा स्ट्रीमिंग की मैंने आपको बताया है यार. देयर इज एन इशू दैट इट लैग्स फॉर मी इफ आई यूज अ स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हियर. सो इट इज व्हाट इट इज. क्या चल रहा है रे रेनिसू. आज का प्रोपेगेंडा नहीं आया दोस्त. वेयर इज माय एडू एंड जॉर्जिनियो प्रोपेगेंडा, प्लीज सेंड. एंड सिर्फ डीपी से काम नहीं चलेगा. हेलो हेलो पीबी. प्रसन्ना is here guys. Morning here. I'm in London for a week in June 1st. We'll be going for the World Test Championship first day. We'll meet. It depends if I'm in London, dude. I'm in Dublin right now, but if I'm in London, 100% I'll let you know. We'll definitely meet. We'll definitely meet for a pint or something. Okay, 100%, 100%. And if it's the summer over here, na, then I can definitely come over for a few days. No problem, dude. Yeah, nice to see Prasanna here, guys. If you like Chelsea content and if you like ISL content, आप लोग रोते रहते हो ISL content के लिए. Go to PB Talks. Subscribe to Prasanna. You will get ISL content. You'll get Chelsea content. He's a really good creator. He's a really good talker. Belfast, safe to work as an Indian. I've never been to Belfast, so I can't really say. Which Bollywood movies you like the most and your favorite actor? Mine is Anurag Kashyap. I like Anurag Kashyap. I also like Sanjay Leela Bansali ki kuch films I really, really like. You know, for some reason, many Ranveer Singh movies I really like. And every Shah Rukh Khan film I love. I don't care what people say. Ravan ऐसी थी, fan ऐसी थी. I love Shah Rukh Khan movies. UPI password. हाँ मैं अभी DM करता हूँ भाई तुझे. PL top according to you, Man City. भाई
कैप कट, हाँ, कैप कट एंड लाइट मोशन पर ही करता हूँ, फुटबॉल की एडिटिंग करता हूँ मैड्रिड यूनाइटेड सीएसएन पर। तो काम भेज दिया है मुझे अपना, देखते हैं कुछ अगर बन सकता है तो या नहीं। Do you watch cricket? I stopped watching cricket. It became too corporatized and too money minded. ट्रेन में हूँ, नेट नहीं चल रहा, मेरे को तो प्रोपेगेंडा चाहिए दोस्त। Any concept of tier 2 colleges in Ireland? Not really sure, man. I went to a university, but there are tier 2 smaller colleges, but most people usually go there for cheap education. Um, College is not seen as a sort of jump to jobs जैसे हम लोग सोचते हैं. College is just for education and people do whatever after that. Um, how long have I been an Arsenal fan? 21 years, I would say. 21, 22 years. Apart from studies, I'm into writing music and I sing too. Earlier last month, I recorded one song in studio as I was coming out of my hands and legs were shivering. I couldn't feel my legs for half an hour. Damn. बहुत interesting है दोस्त. And I'll tell you, you can, if you don't even want to go to a studio, just save up some money, buy a nice mic. If you don't want to, वरना तो अब जरूरत भी नहीं होती. You can just use a really good, every phone has a decent camera. You can just use that. Clip on mic ले लो, कोई भी mic ले लो. Just sing, put it on YouTube, maybe you'll grow big. You never really know, dude. आपने इतने सारे लोगों को just because of a YouTube video से एक big break मिलते हुए देखा है. And if you don't want to sing and if you want to song write, plenty of avenues there as well. इतने सारे independent artists होते हैं, इतने सारे independent singers होते हैं जो आप करियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे. You can write for them and hope that one of them becomes big and then you can also project yourself from that. बहुत बहुत opportunities हैं दोस्त. The surge of Indian football YouTube community. What is the reason according to you? Great crazy nation like India is shifting towards football. Has IPL destroyed the sanctity of cricket? No, 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 no. I think if I started a channel on cricket today, if anybody started a pure cricketing channel today, they will get so many views, so many subscribers because I still think it's a cricket. I just think there needed to be an outlet for football fans जो था नहीं, बहुत absent था. And अपनी लैंग्वेज में ही कोई आपसे बात करे, आपके सेम ही चीज़ें फ़ील करे एंड एवरीथिंग, अच्छा लगता है. दैट इज़ व्हाई. हू इज़ द ट्रू ओजी? आई जेन्युइनली वांट टू आस्क यू गाइस, हू इज़ द ट्रू ओजी ऑफ द इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी? जो सबसे पहले जिसने, कोई इंडियन था जिसने फुटबॉल चैनल बनाया था? बिकॉज़ आई डोंट नो. आई डोंट थिंक ये सारी इंडस्ट्री ऐसे ही आ गई है. अगर ऐसी आई ही है, कोई तो होगा जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, हिंदी में या फिर इंडिया में कुछ भी. डोंट यू थिंक जेम्स मिलर को अच्छे से चूस लिया है? हाँ हाँ, 100% यार. 4 years into फुटबॉल एंड सिटी. व्हाट? सुबह 6:30 निकला था कॉलेज के लिए, 1.5 घंटा मेट्रो, फुल डे कॉलेज, 1.5 घंटा मेट्रो, 6:30 वापस. थकावट हो रखी है. लाइफ इज मंडे, ओनली 10 hours शाइनिंग मेक्स मी हैप्पी. दैट्स लाइफ डूड. एंड जैसे सादिक भाई ने भी आके बोला था, ग्राइंड तो करना ही पड़ता है लाइफ में डूड. अभी नहीं करोगे तो आगे करना पड़ेगा, और वो लंबे टाइम के लिए ग्राइंड करना होता है फिर. नहीं, आई एम नॉट रियली इनटू एड शीरन टू बी ऑनेस्ट. Yes, United as rivals, always enjoy them as rivals, hate when they win, love when they lose. But I'm really happy कि Arsenal and United are on the way up. Full of respect. It's like a very respectful competitive rivalry in my head. Which is why you'll never see me badmouth United. You'll see me laugh. You'll see me get angry when they win. Like, not angry also. You'll not see me happy when they win. But there's always going to be a sense of respect. That is why you'll never see me um, banter United or whatever it is. I don't believe in this bantering bullshit. YJR, Drog Baba, YJR is the OG of all of this, हाँ? ठीक है. Drog Baba and my धेनुका जी. धेनुका का चैनल थोड़ी है यार. यश YJR, Talk Football, Free Kick Sing, okay. यश. ठीक है, समझ गया. Me, I bought football to the Indian community. भाई तुम तो मसाज लाए हो दोस्त. तुम्हारा तो यही अभी तक कंट्रीब्यूशन है. ओके, मेरे पास क्या है? हाँ, अभी तो देखो दोस्तों, 2 बजे खत्म करूंगा मैं. लंच भी करना है, ट्यूसडे भी बंद है जगह. देखते हैं क्या है. Talking about corporatization, hasn't football been through a similar rigmarole? It'll only get more commercialized as we go. I think corporatization of any cultural activity is inevitable, but it's also the kind of commercialization and corporatization also. So I've explained already. The reason I got put off from cricket was not because IPL started, it because how IPL transformed.
From the first season of IPL was absolutely amazing. Second season भी बहुत बढ़िया था. It was just when they started introducing these DLF maximums and Yes Bank maximums and Vivo Catch of the Days and भाई मतलब आप हर चीज में स्पॉन्सरशिप घसीट रहे हो एंड एवरीथिंग यू कुडंट इवन एंजॉय अ सिक्स इन पीस भाई विदाउट हियरिंग अ कॉर्पोरेशन नेम. जैसे एनबीए आई आई फॉलो एनबीए बट आई डोंट वॉच एनबीए बिकॉज हर 5 मिनट में देर इज अ टाइम आउट एंड ब्रेक में एड्स एंड all of that stuff I really don't like, bro. So yeah, man, it's it's the kind of corporatization which really made me angry. Bhavya is the real OG. I don't know who Bhavya is, man. I'm genuinely sorry. I really don't know who he is or who she is. Um, Bring YJR on the podcast. It will be great. There's two things about this. One, I don't know Yashash doesn't know me. The second is I really love his content. I just don't know मेरे साथ fit कैसे बैठेगा because you know the kind of person is. काफी बकचोद आदमी, अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है. He is high energy. I am low low काम energy. अच्छा, भव्य is YJR, YJR is भव्य. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. प्राइम ड्रिंक नहीं टेस्ट किया बट जितने लोगों ने किया है सब कह रहे हैं बेकार है. बट जो है सो है यार. ओके, अभी मेहनत कर लो जैसे फ्यूचर में बुरी हालत ना हो. देखो यार, मेहनत तो धीरे धीरे तो हर पूरे लाइफ में करनी पड़ती है, बट आपको 40 साल मेहनत करनी है, 4 साल मेहनत करनी है, वो आपके ऊपर है. बस 1.5 साल कॉलेज, फिर नौकरी एंड पोटेंशियली एमबीए प्रेप एडमिशन इन इंग्लैंड. जो भी है दोस्त, अभी करना तो पड़ेगा देखो थोड़ा सा. इट्स नॉट गोना गेट ईज इट्स नॉट गोना बी कंप्लीटली इजी, इट्स गोना गेट ईजियर. रुक लो यार, तुम वैसे भी बहुत कम लाइव आते हो. रुक लो. अच्छा, पता नहीं यार. अच्छा, Yash's original name is Bhabya. Okay, okay, okay. My original name, वो my original name, well, not original. मेरा नाम तो दक्ष ही है. पंडित कह रहे थे कि मेरा नाम होना चाहिए अनुपम. Thank God, अनुपम नहीं है मेरा नाम. Not that there's anything wrong with that name. I just don't think that name is a good fit for me. Um, if you would ever start a business, what would it be? Real estate. Real estate में घुसूंगा मैं, if I could. Or I would be, I'd take up psychology and I'd become a therapist. I'd like to know how my mind works, and I'd like to help people figure out how their mind works. So yeah, A for Anupam. Yes, A for Anupam. Oh damn. Okay. Talk football is the real OG. What moves? अरे नहीं नहीं, ये पूरा what moves and transfers and everything not going to be discussed. If you ever हो गया, Michael Parenti, please. I'm sure you love him. Okay, fair enough. Anupama nahi bhai, Anupam. Dhanraj Dhurve is the OG, is making content about Indian football for 4 years now. Fair enough, bhai. United and Arsenal rivalry takes me to 202. Started watching football, fierce battles. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. तब न्यूज़पेपर में ही देखना पड़ता था और मैं देखता था ESPNstar.com पे. हेलो अनुपम ब्रो, अनुपम फॉर आर्सेनल. तो ओजी का ओजी मॉड है. हाँ, अच्छा, ऐसी बात है. आई नेम माई सन्स लैटन बिकॉज रोल नंबर लास्ट आएगा. बहुत ही बढ़िया भाई, आप हो आगे. यू विल डू ग्रेट एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई थिंक साइकोलॉजी एंड थेरेपी इज more than giving advice. It's also to do a lot with guiding people the right way. Look, I can give you advice, but I don't know how you guys are following it. And अगर आप लोग follow नहीं कर रहे तो मैं बोलूँगा देखो ये तो आपके ऊपर है. But a therapist job is not that. A therapist has to come up with creative ways to keep motivating a person over and over again. Couldn't even enjoy a six in peace. हाँ भाई, ये quote for the ages. भाई वही बात है यार, क्या मतलब, बंदे ने छक्का मारा, आप खुश हो रहे हो, लाइक देयर इज अ डीएलएफ मैक्सिमम. You love organic farming, providing fresh ingredients to the best restaurants. I like Bastable. बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी. अच्छा, ओके ओके ओके. If you like, dude, this is absolutely amazing. मेरे पेरेंट्स भी यही चाह रहे हैं. I think they're going to retire soon and they're just going to turn to organic farming. Hello, Venom, how are you? Daksh nahi to Rishi would have been a good name. Rishi. I think Rishi would be fine, yeah. I already have a cousin जिनका नाम ऋषि है.
Uh, your son will never get old. What was your house in school? My house was first it was Ganges and then Jhelum. DPS. अरे 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 स्ट्रीम बंद हो गया. Oh, thank God. He knew about your अनुपमा वाला name. Yes. सर आपकी स्ट्रीम देख के मोटिवेशन आती है. मैं तो बैकग्राउंड में भी इंग्लिश पढ़ रहा था. यार देखिए रियांश, मोटिवेशन एक चीज होती है, उस पर काम करना एक अलग चीज होती है. यहाँ पे कितने व्यूअर्स हैं? इतना अजीब क्यों आ रही है? ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. आई हैव अ यूट्यूब चैनल. ग्रेट. So should I start that or focus on getting better place job? How to focus on both with current permanent job? Well, as far as I can tell, your school will probably get over at 3:34. उससे मैं तेरे को worst case scenario 2 घंटे का भी commute मान लूँ, you'll be home at 6. From 6 to 8, let's say you do bakchodi, and 8 to 9 you have your dinner and you do your cleaning and other chores and whatever it is. Work on your channel from 9 to 11. Work on your channel from 9 to 11. That's it. Record a video, edit a video, release it, schedule it for the morning. खत्म. 2 घंटे लगा ले दिन के. और लगाने तो 4 घंटे लगा ले. 1 घंटा स्ट्रीम कर ले, 2-3 घंटे वीडियो पे बना ले, एडिट कर ले. दैट्स इट. मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा. इट इज. व्हाई डोंट यू वॉच टेस्ट क्रिकेट? आई लव टेस्ट क्रिकेट, बट आई जस्ट, मेरा बस वही कह रहा हूँ ना, मेरा क्रिकेट से एक बार मन उठ गया तो उठ ही गया मेरा. So all of that. What was the feeling after listening from Arteta that Saka is fit and available? I'm very worried for him, dude. He's getting kicked too much. So I'm cautiously optimistic. Real Madrid versus Liverpool का नहीं, मैं नहीं कर रहा. इतने सारे लोग करेंगे यार, मेरा क्या है इसमें? दिव्यांश करेगा, मैं दिव्यांश की स्ट्रीम पे चले जाऊंगा, अगर पूछूंगा उसको अगर वो अवेलेबल है या नहीं. अरे यार, मेरे को निधि भाई से दिव्यांश का नंबर भी लेना था. ठीक है, मैं चैट पे आ जाऊंगा, पूछता हूँ उससे. My home is Rishi. My home name is Rishi. Very nice. Mine was Chinab. अरे येलो वाले साले पीले. फिर ऋषि खुशी. लक्ष्य भाई, नीट की तैयारी कर रहा हूँ. मोटिवेशन दे दो. डॉक्टर बनना है तो नीट करो. क्या ओके. मैंने बोला था मोटिवेशन में तो कहाँ से आनी चाहिए तुम लोगों की. इफ यू थिंक, मैंने बोला था अगर तुम 3 महीने पहले की बात सोचो, वेर यू वर, इफ यू न्यू समथिंग दैट यू नो टुडे एंड यू अप्लाइड इट 3 months अगो, तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट होती. एंड इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी एनीथिंग, कुड बी मनी, वट एवर. आई एम सेइंग just do the things today that the future self of yours will be very thankful for. I was very thankful जब मेरा आयरलैंड में एडमिशन हुआ था. आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर माई पास्ट सेल्फ कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं पीएचडी की एप्लीकेशंस की तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर दूंगा. सब लोग अपनी जॉब्स की तैयारी लास्ट के 2-3 महीने में बड़ी चिल चिल करके कर रहे थे. सबको इवेंचुअली जॉब मिल गई, लेट मिली बट मिल गई. आई स्टार्टेड एन ईयर अगो एंड आई वाज लाइक सो थैंकफुल. यार दक्ष भाई, तूने किस्मत बचा ली, तूने जान बचा ली. यू गेट टू गो टू अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू गेट टू स्टडी समथिंग यू रियली 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 लव. थैंक यू पास्ट दक्ष. एंड भाई असाद, यही बात है. तुम आज जो एक्शन करोगे, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए. दैट्स ऑल आई विल से. वरना वही रिग्रेट में जियोगे, काश मैंने आज पढ़ाई कर ली होती. एंड यू विल बी लाइक दिस 3 months लेटर. विल बी लाइक काश मैंने 3 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर ली होती, शायद से नंबर आ जाते मेरे. That is the all the motivation. You said you enjoy YouTube and it's not necessary for you to do it. So would you leave it? You find it boring? 100%. जिस दिन ये जगह टॉक्सिक हो गई, जिस दिन मेरा कनेक्शन मेरे फैन से टूट गया, जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स टॉक्सिक हो गए, जिस दिन मेरे को लगा कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा. नॉट दैट आई एम हंग्री फॉर लव एंड अप्रिसिएशन और अटेंशन. इवन इफ 5 people like my work, that's worth it. But the day I feel I'm not making the content I like and I'm just pandering to views and toxicity बहुत बढ़ रही है, उस दिन मैं छोड़ दूंगा ये 100%. एमिटी के हो, अच्छा एमिटी भी ठीक ही है यार. अब तो बहुत अच्छा हो गया. मैं बढ़िया, आप बताओ. बिल्कुल बढ़िया भाई. मेरा पहले कुनाल रखे थे वाला. हाँ, फिर से ऐड नहीं, मैंने अभी ऐड नहीं डाला, बट डाल देते हैं अभी ऐड. आई फील गुड, मोरल बूस्टेड वाचिंग बियॉन्से जे लो सॉन्ग्स. कंटेंट वेरी क्लोज टू हार्ट. ऑफ कोर्स मैन. यस, चनाब पीएचडी कर रहा हूँ, मोटिवेशन दे दो भाई. पीएचडी के लिए क्या मोटिवेशन है? आई थिंक जितनी ह्यूमैनिटी ने नॉलेज क्रिएट करी है, यू आर इन द प्रिविलेज्ड पोजीशन टू ऐड टू दैट नॉलेज. बहुत लोग नॉलेज कंज्यूम करते, तुम उस नॉलेज में ऐड कर सकते हो. मेरे लिए पीएचडी ही करना
such a huge thing for me. If you wanted to do your PhD, figure out why you wanted to do it. Was it to escape a job? Then I can't motivate you no matter what. But if you joined a PhD because you genuinely wanted to do something which aids humanity, or not, if not aiding humanity, just contributes to a knowledge, makes it better, refines it, disproves previous knowledge, I think that's better. Yeah. Optimism, wrong or right? Optimism is always right. I don't think optimism should be wrong. False optimism is wrong. जर्मनी में मोटिवेशन दे दो, किस चीज़ की मोटिवेशन भाई? सुमन भाई, आप मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मॉड्स हम हैं, हम टॉक्सिसिटी बचा लेंगे सर। अरे समटाइम्स मॉड्स ही टॉक्सिक हो जाते हैं यार, रैंडम बैनिंग हो जाती है। तो जिस दिन मुझे लगे ये चैनल हाथ से जा रहा है, लोग अच्छा नहीं कर रहे, आई विल क्विट। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जेन्युइनली जरूरत नहीं है ये सब करने की। आई लाइक फुटबॉल, आई कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन डू अबाउट इट, और कुछ नहीं करना तो भाई आई कैन जस्ट स्टे, आई कैन फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई कैन जस्ट, मैं चैनल नहीं चलाऊंगा, मैं दूसरों के स्ट्रीम पे जाके बोल दे लूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो बात ही तो करनी है ना। तो मैं तो छोड़ दूंगा भाई उस दिन अपना चैनल ये। स्मॉल कॉटेज बेटर देन मैसिव टॉक्सिक डूम, आई एग्री मैन, आई एग्री। व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक? ओके, सो आई वेक अप एट 6:37. If I have the energy and the will to exercise, I will. I do exercise. I figure out what chores I have to do. I take my first shower. Then I sit and study. अगर कुछ stream वगैरह नहीं है, then I sit and study until I have to go to work. Go to work, have lunch on the way. Come back from work by 6:37. Figure out if I have to shop anything. Do that shopping. घर आओ, dinner बनाओ, second shower लो. फुटबॉल है तो फुटबॉल देखो, फिर पढ़ाई करो, देखो क्लासेस हैं, क्लासेस के लिए क्या हैं, लास्ट के 2 घंटे पे अगर ईमेल्स वगैरह नहीं हैं, आई डोंट नीड टू रीड एनी आर्टिकल्स, देन आई प्ले समथिंग, एंड इफ टाइम मिला तो और वीडियो बना दूंगा मैं। बस ये है, ऐसे है मेरा रूटीन में ना। एक्चुअली आई डोंट डू टाइम रूटीन्स, आई हैव 4 to 5 थिंग्स टू डू डेली, विच इज पार्ट टाइम जॉब, PhD वर्क, क्लास वर्क, यूट्यूब, chores, relationship. 5 to 6 things I have to do, and I keep just moving these things around throughout the day, depending on how the day is. कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था यार, अब छोड़ दी मैंने, बहुत कंपेटिटिव हो गया। फेवरेट रॉक म्यूजिशियन बैंड, ओह, अभी ग्रेटा वैन ब्लीट है, वरना यू हैव योर क्लासिक्स, लिंकन पार्क, ग्रीन डे एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ग्रेटा वैन ब्लीट राइट नाउ। फेवरेट वीडियो गेम अदर देन फीफा, आई लाइक I like tactical games. I like shooters. So Ghost Recon games I really like. Mass Effect. I really love Mass Effect. I like The Witch. I love The Witcher. बहुत सारी video games है. This is the Police. Democracy 3. Stanley's Parable. All these things भाई. अभी आया कॉलेज से, हेलो प्रतीक, कैसे हो दोस्त? तो लेट हो गया, अरे नो प्रॉब्लम दोस्त, अभी भी आई थिंक 1 घंटा तो हम चला ही सकते हैं स्ट्रीम, शायद से। यही सुनना चाहता था। देख यार सुमन, PhD इज अ वेरी मैसिव अंडरटेकिंग मैन, एंड आई नो यू कैन अंडरस्टैंड इट। जर्मनी में स्पेशली यूरोपियन एक्सीलेंस तो आपको फॉलो करनी ही पड़ती है। समटाइम्स इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू, यू विल फील स्टक, बिकॉज हमें जैसे पढ़ाई की आदत होती है दोस्त, हमें सिलेबस होता है, सिलेबस का कर लो, कवर कर लो, पढ़ लो, मार्क्स ले आओ, डन। This is an unending journey, and you have to mold your own way, and it's very difficult to do it. I would suggest you find people who are also on this journey with you. I'm sure you have a lot of fellow PhD students, Indians, Europeans, whatever. Just find your crowd, man. And once you find your crowd, you will just find your people, and it'll be fine. It'll be absolutely fine. Once you know that you're not alone and you're not traversing this ocean by yourself, it'll be okay. Oh, sorry. I did not mean to patronize you by calling you fans and friends. मेरा मतलब था कि जो लोग अगर मुझसे बात करने आते, subscribers, friends and all of those things, जिस दिन टॉक्सिसिटी आ गई उस दिन मैं छोड़ दूंगा। आप 29 एज में पढ़ क्यों रहे हो? जेन्युइनली, डज इट बिल्ड योर पोर्टफोलियो? नो, बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी। मैंने बताया हुआ स्ट्रीम पे कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था कॉलेज से, एंड देन आई हैड टू रीस्टार्ट, एंड देन उसमें टाइम लग गया, एंड यस आई कुड हैव वर्कड, सीधा जॉब ले लो, शादी कर लो, ऑल दैट स्टफ, बट आई रियली वांटेड टू create some new knowledge and understand something. Yeah, that's it. आज रात का क्या सीन? वॉच अलोंग देखता हूँ यार। आई विल सी इफ समबडी इज डूइंग अ वॉच अलोंग, अगर उनके स्ट्रीम पे आ सकता तो आ जाऊंगा, अदरवाइज देखते हैं यार। DTU DC, हाँ मेरे एक कजन पढ़ा हुआ है, उसमें से ग्रेजुएट हुआ हुआ है। दैट्स ऑल आई नो अबाउट DTU DC मैन। इफ आर्सेनल क्रैक्स, अरे छोड़ो छोड़ो, नो ट्रांसफर टॉक मैन,
ठीक हूँ भैया, हेक्टिक था दिन आज तो थक गया। नो प्रॉब्लम मैन, इट्स ऑल गुड। ठीक है, थैंक्स मृत्युंजय। ओके, ऑलराइट, दैट्स गुड या सुमन। बाय गेमिंग एस जेएमएल, भगवान करे आपका कैप्स लॉक ठीक हो जाए, बट रियली नाइस टू हैव यू हियर एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैवंट गाइस। 191 लाइक्स हो गए, लेट्स गेट टू 200 नाउ। And of course, I really appreciate your support, no matter what it is. How hard do you for you to start again studying after dropout? It was hard in the sense that it was something I really didn't like at that time, but it was easy in the sense that I was very motivated to finish it. मेरे को खत्म करना था भाई. I wanted to finish and I wanted to graduate the best in my class. So yeah, 200 likes incoming. That's great. Thanks यार. 193 हो गए अभी. Now I was asking whether to resume the YouTube channel or to focus on my energy on a better place job where I'll have a better atmosphere. I think you can do. It depends on what your priority is. What do you exactly want from your YouTube channel? Or do you want to focus on your better place job? If you want to focus on the job, then if you want a better job more than a good YouTube channel, then you focus on your job search. And if you find ki like nahi, I'll survive with this job, my YouTube will be my outlet, then you do your YouTube. Simply as that, bhai. But you sound like a very knowledgeable person, yeah, Vishal. I've interacted with you many times on stream. You have some very interesting ideas. So don't ever let anything hold you back. You have to figure out what your priority is. If it's to move away from this atmosphere, then you just focus on your job. And if you think YouTube is a good outlet for you, then you get a then आप YouTube channel पे focus करो. You're 24. Wow, that's huge, man. You have a lot of time. I hope you contribute and you make something really interesting for yourself and for the world, of course. कितने ads जितने मेरी मर्जी. James Joyce Center. No, मेरे college में James Joyce Library. I haven't been to the James Joyce Center. I don't know if you mean the same thing. What does space in a relationship look like? Can you can you both talk after 3 to 4 days and be okay with it? How long have you gone without talking to your partner in a relationship? Thankfully, me and my partner are very communicative and talkative. So I think the maximum we've gone away without talking to each other is a day and a half, I would say. उसका बाद हम दोनों की फट जाती है. फट क्या जाती है मतलब मन करता है कि वापस बात करो यार. Do you play Roblox? No, I don't. Okay, दक्ष भाई चलता हूँ. Bye bye वैभव. Best of luck भाई. कब तक स्ट्रीम करोगे? Most likely 45 minutes more. That's it. Who is third person after 9? Undergrad from India or from any good European university? Depends on what you want to do, man. अंडरग्रेड भी क्या है उस पर फर्क पड़ेगा. कुछ चीज़ें इंडिया में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें इंडिया में बहुत बेकार हैं. So depends on what you want to do. You have to be a little specific here, Dokodo. What's better, doing masters right after bachelor's or doing job for some years? Depends. If you want to do a really good masters from a really good university, a work experience is pretty much necessary. If you think you are somebody who once they start working and start earning money और मुझसे उसके बाद पढ़ाई नहीं होगी, then you just straight away masters कर लो bachelor's के बाद. It depends on the kind of personality and outlook you have in life and what your goals are. If your masters, it really doesn't matter whether it's from the best university in the world or the 50th or the 100th best university in the world, then it's not necessary to do any job. But all top universities, I'm saying top 5, top 10, require considerable work experience. It's better to also have work experience in that scenario. I'm a Chelsea fan and I like the photos behind you. Thank you so much. How can I get one for me? There is a website called Displate, displate.com. आप उनसे मंगवा सकते हो, बट काफ़ी महंगा है. आपको शिपिंग फीस अपेरेंटली बहुत ज़्यादा है, किसी ने बताया था. एक दिन था जब दक्ष भाई ने 3.3 के सब्स का टारगेट रखा था. आज 3.6 हो गए. अब नेक्स्ट टारगेट सीधा 4K दोस्त. अब हम बढ़ेंगे. अब हम बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से हम 4K पे पहुंचेंगे. हेलो आदित्य, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू मैन. Because I too dropped out of college due to family reasons and again completed college. Good man. Like I said, I was very motivated to finish as the best in my class. जो लोग भी मेरे को डाउट करे थे नहीं होगा, छोड़ दिया. मैं was like, wait. दक्ष भाई, आप अभी भी गेम खेलते हो या पहले खेलते थे? अब बहुत कम हो गया यार मेरा गेमिंग. लिटरली बहुत कम हो गया because I have decided to focus more on my YouTube.
तो अभी जितनी ग्रोथ है, आई डोंट वांट टू लूज दिस मोमेंटम, सो माय गेमिंग इज वेरी 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 लिमिटेड. सो या, हेलो एंड व्हाट्स योर नेम के बाद क्या बोलते हैं लड़की को, ये बता दो. हेलो, व्हाट्स योर नेम डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. इफ यू मीटिंग somebody in college, जैसे कि what are you studying here and everything, you introduce yourself as well. Hello, what's your name? I am here, I am doing this, is my major, yeah, this is my, this is the course I'm in, what about you, blah blah blah, it's the first time I'm seeing you here. um and of course you ask them if they want to talk to you as well. ऐसा नहीं कि बस घुस के सीधा अपना इंट्रो मार दिया. Ask them their name, introduce yourself, get to know them more, and ask them, basically do make questions in a way that makes them talk about themselves, and ask them if they're comfortable talking to you as well. 1 or 2 hours from waking up, I'm always so lost, can't do anything productive even if my sleep is complete. Any solution? One solution is, अगर अलार्म लगाता है ना तो आयान, कीप योर फोन इन अ प्लेस जहाँ पे तेरे को उठ के अलार्म बंद करना पड़े. लाइक डोंट कीप योर फोन नेक्स्ट टू द बेड कि तूने अलार्म बस खत्म कर दिया, तुम बिस्तर पे ऐसे बस लेटे रहे हो. As soon as you get out of bed to close the alarm, do something. Either brush your teeth or just do 5 push-ups or 2 push-ups, or घर का कुछ काम है तो वो कर ले दोस्त. Anything you can figure out. Just do one activity and then your brain will be like, चलो दिन की शुरुआत हो गई. If your daily routine is you wake up and you're in bed for 2 hours, then your brain is like, ठीक है, अभी मेरे पास 2 घंटे हैं स्लैग करने के. Put your phone in a position where you have to get up, and उसके बाद just do one thing and your brain will tell you दिन शुरू हो गया. Simple as. I'm 19 in software engineering, branch in DTO, and just prepping for my internship season, participating in CP, giving contests, making project building. I hope, good luck, dude. Kushagra, that's the best thing you can do. Just keep pushing yourself. Dheere dheere, you will start finding your direction as well. Do you believe what they say about talking regularly leads to fading the spark in a couple of relationships? Dekho yaar, there is no singular blueprint for a relationship. If somebody says to you, I have personally had horrible long distance relationships and great long distance relationships. स्पार्क में अब क्या रेगुलरली बात करें या रुक रुक के बात करें या 3 दिन बाद टेक्स्ट करें या सिर्फ 1000 टेक्स्ट ही करें या फिर 200 बार ही कॉल करें, या देयर इज नो blueprint like this. It depends on person to person. If your partner is not a texter, then don't text them incessantly. If your partner cannot deal without, let's say, physical proximity, उनको they need somebody to be around them as a partner, then don't try long distance with them. That's all I'll say. कि everything depends on a partner to partner. वैलो खेलो नहीं खेली जाती यार, ये CS वैलो मुझसे नहीं खेली जाती. बहुत लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरे को फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन्स कैरेक्टर इफ आई फॉलोड इट, आई रियली लाइक ब्रॉन, जो टेरियन का मर्सनरी था. दैट गाय, आई लव दैट. Why do you listen to old classical music? It's all modification of these songs. Lo-fi culture is destroying all originality of OG music. I listen to a lot of music, but old classical depends on the kind of old classical you're talking about, bhai. Goodbye. Hope you're doing as well. Just nervous for today's. Yeah, man. Your team is facing Liverpool today, so best of luck. Hello, Guitar by Nitya. कैसे हो यार? काफी टाइम हो गया. लेट हो गए तुम, but nice to see you here, man. Nice to see you here. Okay, 58 लोग आ गए हैं. तो तुम लोग सबसे पहले इसका तो मैं वो कम कर देता हूँ. What do you say? What do you say? स्लो डाउन, जो भी पॉज वाला होता है, स्लो मोड उसको कम करते हैं पहले. तो एक सेकंड दोस्तों, देन विल टेक द क्वेश्चन. कंटेंट लाइव, हम एनालिटिक्स पे क्यों आ गए हैं? Okay, slow mode will be now 30 seconds. अब आई थिंक इतनी जनता है कि वी कैन पुट इट टू 30 सेकंड. अब उतने को आएंगे नहीं. भाई यार, मॉड बना के क्या फायदा? प्रोटॉन से ज्यादा पॉजिटिव चैट है ये. किसी को भी बैन नहीं कर सकते, वही है यार. बट मॉडरेटर्स का मैंने बताया है, वेदांत, इफ यू वर देयर, यू नो व्हाट योर जॉब इज. Not only to stop toxicity, but also keep the conversations growing, and help people who are looking for answers to questions I've already addressed. Okay.
There is a rule of 75 attendance rule in my university. I want to learn web dev, but don't get time to practice it. What should I do? Well, I'll tell you one thing, man. There is definitely time in your life. ये स्ट्रीम अगर 1 घंटा भी चलेगी एंड आपके पास 1 घंटा है, आप ये स्ट्रीम बंद करके आप वेब डेव कर लो. देयर इज योर 1 आवर. आपके पास टाइम नहीं, आपके पास टाइम है दोस्त. आपको आपको तो वैसे ही पता है मैं इतना चिल्लाता चिल्लूता हूँ नहीं. इफ यू वांट टू लिसन टू मी आल्सो यू कैन पुट इन ईयरफोन्स एंड जस्ट डू वेब डेव साइड बाय साइड. A lot of people do music and coding. So you have time, just have to find it from somewhere. um, if you're playing video games for 2 hours, make it 1 hour. 1 घंटा web dev को दो. You have time, man. I am telling you 24 hours. मैं तो कह रहा हूँ 24 hours means आप 8 घंटे भी सो लो. 16 घंटे is enough for 5 good tasks in your life. Okay. De Bruyne, Stones, Laporte not in training. पता नहीं क्या ही चलता रहता है मैन सिटी में. Yes, yes, I remember. My favorite are Tyrion for his acceptance of himself. Fair enough. Ireland is famous for high cliffs, isn't? Yeah, cliffs of Moher. Uh, I haven't visited. Kashaf, thank you so much for the contribution, man. First contribution of the day. Always nice to have that. Kashaf, thank you so much for the sticker. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपने कुछ स्पेशल स्टिकर तो नहीं भेजा मेरे दोस्त. आई वुड हेट to miss out on something that you send with so much love, मेरे यार. Where is this? ये यार अच्छा नहीं लगता मुझे, बार बार ये सब करना पड़ता है. चलो. Tyrion in books is way more shady. हाँ, he's a very dark character in the books, man. Tyrion in the books, very dark character. बकचोदी कम कर भाई, कॉलेज में टाइम ही टाइम होता है. हाँ यार वही है, एसेंशियली यही. कॉलेज में टाइम नहीं होगा आपके पास तो लाइफ में तो आप डूब ही जाओगे. मैं भी साइड बाय साइड मैथ्स ही पढ़ रहा. हाँ बस मैथ्स पढ़ रहे हो. वेनम इज ऑन हिम लाइक अ मम्मी. कर भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे दोस्त. जस्ट फॉर द शो इटसेल्फ, नॉट द बुक्स. हाँ, फेयर इनफ, फेयर इनफ. ओके. 2 hours 21 minutes. We can still go for a while. I think I can still go for a while. मेरे को कहीं लंच करना है. Go to college also. भाई थक गया हूँ मैं. Kishore Kumar, Mohammad Rafi type, some type of Rag Bhairavi. My gym playlist is sometimes Kishore Kumar only. सही है यार, सबकी अपनी अपनी होती है. And it's good. मैं पुराने गाने. I think mostly Kishore Kumar and Lata Mangeshkar I've only heard. I don't like Danny in the book. She's very impulsive. Yeah, because she's a kid, right? In the books. Daksh, I have a problem even when Arsenal, when I waste a lot of time on stuff related to Arsenal. I have UPSC exam in May. Arsenal's my only stress booster. Booster नहीं होना चाहिए, buster होना चाहिए. But I struggle getting my पढ़ाई on track. Okay. Ayush, I will tell you something. It's something I also suffered with when I was in my masters. आर्सेनल जब अच्छा नहीं खेलती थी उस टाइम में मेरा मूड बहुत खराब होता था. एंड आई वाज लाइक तो आर्सेनल का गेम देख लिया, मूड खराब हो गया, पढ़ाई हो ही नहीं रही मुझसे. थैंकफुली आई ग्रेजुएटेड वेरी वेल, टॉप ऑफ माई क्लास इन माई मास्टर्स, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा. आई विल टेल यू वन थिंग यार आयुष. आर्सेनल was there before you were born. Arsenal will be there before I was born. Anybody in this chat was born. Arsenal will be there when we all die. So Arsenal will stay constant. I understand it's a stress buster, man. देख, I तो honestly believe एक बंदा दिन में 8 घंटे से ज़्यादा, 8 भी एक्सट्रीमली हाई है. मेरे को तो लगता है 6 घंटे ज़्यादा दिन में कोई पढ़ाई कर नहीं सकता, अच्छी पढ़ाई. एंड आई मीन मीनिंगफुल पढ़ाई. अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आप एक चैप्टर पूरे दिन भी लगा सकते हो और आप एक चैप्टर 1 घंटे में भी कर सकते हो. बट मीनिंगफुल पढ़ाई मेरे हिसाब से 4 से 6 घंटे होती है, उसके बाद अपना दिमाग थक जाता है. तो आर्सेनल कहीं जाएगा नहीं, ना तेरे यूपीएससी एग्जाम के बाद. चाहे तेरा यूपीएससी में हो या ना हो, आर्सेनल विल कंटिन्यू. नाउ do you want to enjoy that Arsenal as somebody who cracked their UPSC or as somebody who failed their UPSC? Because I'll tell you, if you crack your UPSC, you will enjoy it much more. It'll be all worth it and all that shenanigans. If you fail your UPSC, you will have to either give a new attempt, in which case
यू आर डिलेइंग व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू एनीवे बाय 1 ईयर, या तुझे कुछ और ढूँढना पड़ेगा जिसमें तेरे को और अलग स्ट्रेस होगा और तू फिर से सेम सिचुएशन में आ जाएगा। सो ऑल आई विल से इज़ डू योर मीनिंगफुल पढ़ाई फर्स्ट। थैंकफुली इंडिया में आजकल के मैचेस शाम या रात को ही होंगे, तो तू सुबह की अगर मीनिंगफुल पढ़ाई कर ले, if you can do it in the morning, do it in the morning, do your 6 hours in the morning, and that's it. Then you use Arsenal as a stress buster. And if you're using Arsenal content as a stress buster, limit it to 1 hour, man. 1 घंटे में तू इतना कुछ पढ़ लेगा, देख लेगा, आर्सेनल के बारे में सारे जिप्स आ जाएंगे, वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। और तेरे को आर्सेनल कंटेंट कंज्यूम करें नेक्स्ट डे कर ले, क्योंकि विक्ट्री का हैंगओवर तो पिछले पूरे 3 दिन 4 दिन चलता है हम लोगों को, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार। सो रिलैक्स कर, यूपीएससी पे ध्यान दे, आर्सेनल तो हमेशा ही रहेगा। I'd rather you enjoy Arsenal once you're a UPSC grad, UPSC selected person. फट रही है मैड्रिड के सामने मैच है, फटनी चाहिए दोस्त। 250 लाइक टारगेट, हाँ यार 213 हुए हैं, बट लेट्स ट्राई एंड गेट 213। दक्ष भाई चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते, बिल्कुल सेम रे तुझे। थैंक्स फॉर लिंकिंग योर वर्क एंड एवरीथिंग। मैं देखता हूँ 2-3 दिनों में। व्हाट्स द प्लान फॉर लंच देन? पता नहीं यार, मे बी आई जस्ट पिक अप सम बनानास और समथिंग, वही खा लूंगा। हैव यू लिसन टू द बैंड बॉलीवुड? आई हैवंट। विंड्स ऑफ विंटर दक्ष भाई, नहीं यार, नॉट रियली। I've आई वोंट से लॉस्ट इंटरेस्ट यार। देख मैं तो वैसे ही ऑडियो बुक सुनता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स वाली, मेरे को तो तभी अच्छा लगता है। कब करेगा जॉर्ज आर आर मार्टिन, क्या भरोसा। आई फील गुड मैन, मोरल बूस्टेड वाचिंग बियॉन्स। हाँ ये तो पढ़ लिया था तेरा दोस्त। भूल जा भाई। जिम प्लेलिस्ट कितनी भी अच्छी हो, पीछे जो चिकनी चमेली जोर जोर से बचता है उससे नहीं बच सकता। दैट इज ऑल्सो ट्रू मैन। How is office like? Like, do you always have to be super formal with everything, or there's leeway for maze like in college? I have not been to an office in such a long time, and also depends on the company. Some companies are hyper formal, like especially if you're working in a law firm, or if you're working in some certain companies, ke certain departments, you have to be super formal. It's okay to be formal as well, man. You can take a little liberty, but not too much. Depends, man. You once you're joining an office, you can just ask them what's the dress code, and they'll tell you. पता नहीं यार कब आएगी विंड्स ऑफ विंटर, एक्चुअली फॉरगॉट क्या पढ़ा था। हाँ, यू माइट जस्ट एंड अप रीडिंग इवन रनेरा इज डार्क। यस यस यस। वर योर पेरेंट्स कूल विद यू ड्रॉपिंग आउट? No, they were not, which is why I had to restart. Mine challenged me to a trial by combat when I floated the idea. भाई पेरेंट्स का सबसे बड़ा ही डर होता है कि हमारा बच्चा निकम्मा लग जाएगा। For the person with color, it's impossible to pull girls in India. What? I don't think so. No, 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 no. I think that's untrue. I think if you are a man of substance, if you are a man of good character, women can sense it. If you're a cheap, galich admi with bad intentions, women can sense it. So build up your character, build up some charm, dress appropriately, talk appropriately. It'll all work out. And I'm not saying every girl will say yes to you, but the right girl will say yes to you. If I'm not wrong, Arsenal is the most OG club in football. Not the most, but yeah, one of the OGs, yes. Enjoy gameplay, tactics, banter, don't go for glory hunting. Yeah, I mean, imagine if that was the case ever in football. Same, I also studied for 4 hours in one day and it's really enough for the syllabus. Huh, dude? By height insecurity, I'm 5'9". Is it good? I have a very good looking face, but height matters when girls consider this perception of an attractive male. Look, man, ये sort of height discrimination, weight discrimination, facial hair discrimination, टकला discrimination, ये तो हर जगह होगा लाइफ में. Women will have height preferences, you might have weight and skin preferences, whatever it is. I am nobody to judge. Everyone has preferences basically. तुम्हारी 5'9" है, you'll just have to look for somebody who doesn't care about the height. Just like if you're a person who doesn't care about, let's say, the weight of a woman, or you don't care about the height of a woman, you don't mind being or dating with somebody who is taller than you, and that girl doesn't matter being with somebody who's shorter than her. It is what it is, man. I've seen so many of my short friends actually pull tall girls, and so many of my short friends pull even shorter girls. So 5'9" is still a decent height, my friend. आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप 5'5", 5'4" थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट उनके लिए एक्चुअली ज्यादा मुश्किल होता है. बुड्ढा मर जाएगा बिफोर विंटर. दैट इज ऑल्सो ट्रू मैन. कृष्णा सुनते हो? नहीं सुनता. बारसा, डोंट फेयर मैड्रिड, आई डोंट केयर अबाउट फुटबॉल इन दिस स्ट्रीम. इट्स जस्ट अ गुड ऑडियो बुक ऐप. ऑडिबल इज रियली नाइस. And
क्या नाम है इसका? स्टोरी टेल है। रुक जा, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी ऐप है, उसका कैटलॉग भी अच्छा है। स्टोरी टेल, STORYTEL, वेरी नाइस। 2 बार हाईलाइट करके इग्नोर कर दिया। क्या क्या है यार, हाईलाइट ने करा था भाई, किसको इग्नोर कर दिया मैंने? आई एम अफ्रेड कहीं RR मार्टिन चलना बस है, वही लग रहा है डूड। ब्रो यू जस्ट टुक माय सेम क्वेश्चन टाइम एंड स्किप्ड इट विदाउट आंसरिंग, अरे डैम। अब तो यार पर्सनल होगी बात, अब तो आयान को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। परफेक्ट वेकेशन, इज दैट योर क्वेश्चन दोस्त? My perfect vacation would be, I like the sea. I actually want to go to Bora Bora, man. बोरा बोरा आप लोगों ने देखा है? इतना सुंदर पानी है यार उधर का, मजा आता है, मतलब प्रॉपर नीला पानी। अदरवाइज ग्रीस, आई वांट टू गो टू ग्रीस। आई वुड से टर्की, बट भाई लोग आजकल जो चल रहा है ना। ओके, लाइक कर देना गाइस। यस, 220 लाइक्स नाउ, नॉट बैड, नॉट बैड। लड़की के सामने तो लिहान मटेरियल लिवरपूल का पेप गार्डियोला बन जाता हूं मैं। Women can sense everything. Just be authentic with them. 100%, dude. These girls are literally 4 feet and expect 6 feet, guys. But it is what it is, man. You just have to go for the people who don't really give a shit about things like that. Everyone is essentially born with the good characters. How we mold ourselves into surrounding and keep what kind of company. Look, man, I am not saying be so good that you're gullible. Be smart about it, but just inherently have a good character. Don't be out there to deceive people or hurt people. समझ गए? बहुत लोगों को देखा है, they lie their way into the pants of women. Promise them love, promise them affection, and then just drop them. ये सब मत करना. Girls prioritize money over anything, true or false? Depends. Um, some will, some won't. देखो यार, इसके भी 2-3 तरीके होते हैं. अगर आप जेंडर रोल्स के बारे में जाओ, नाउ सम पीपल माइट नॉट बिलीव इन जेंडर रोल्स, व्हाटएवर. आई डोंट थिंक देयर हार्ड एंड फास्ट रोल्स, बट आई स्टिल थिंक देयर आर सम बायोलॉजिकल रोल्स of people. Every person, ideally every person, should be in a position to provide and contribute to the family, but mostly it ends up falling to the man first. Primary तो यही होता है, ठीक है? And women can also contribute, women should also contribute, but even if they don't contribute, men should contribute for sure. Not, मैं ये सब bullshit नहीं सुनना चाहता, men are expected, it's unfair. You should contribute, और कुछ नहीं भाई, आपको अपना खाना बनाना आना चाहिए, चाहे बैचलर भी हो. You should know how to feed your fucking self. ठीक है? तो all I'll say is, um, if you're in you should always be in a position to prioritize, provide, and then this prioritize money over everything wala shenanigan आप choose कर सकते हो. Are you with somebody who's only after the money? Judge for yourself. If not, and I'm telling you, so many women are not. So many women are their own person, dude. They don't want any handouts from their pati, husband, boyfriend, whatever. So yeah. हाँ वही है, कंपेयर मत करो. अकॉर्डिंग टू सर्वे ओनली 1% इंडियन मैन हाइट इज मोर देन 6 फीट. ट्रू, मेरी भी 6 फीट से ऊपर नहीं है. आई एम एग्जैक्टली 6 फीट. 6 फीट एंड आई थिंक हाफ एन इंच, maybe half an inch. Cheap but effective purchases. A good perfume. A good perfume is a very cheap. If you get some perfumes are very expensive, but some perfumes are very cheap and very nice. Get those. Good, cheap, and expensive. A good pair of jeans can go a long way. A good shirt can go a long way. Borivali देखा नहीं देखा. My last ex had so many preferences. Must have beard, tall, manly, chivalrous. I feel the expectation is somehow ingrained in my subconscious. How to get rid of them? It's difficult here. I'm not gonna lie. Everyone has some sort of trauma from every relationship. Sometimes it's this, sometimes it's cheating, sometimes it's something or the other, and you always have these things in your head. All I'll say is that you have to fight these things in your own way. I mean, back yourself, tell yourself ki, listen, just believe in yourself. But I can promise you, when you find the right person, you will thank God that it did not work out with any of your previous people. That's what I do. Santorini is heaven. Okay. Santorini Island. Yes. Godly advice. Girls want assurance, someone to support them. Girls want security more than anything. Security, I don't even mean financial security. If a girl feels safe with you, set for life.
आई एम टेलिंग यू, इफ यू कैन मेक अ गर्ल फील सेफ, ये नहीं कि गुंडों की नजरों से बचाओ, सेफ, सेफ्टी इन द सेंस दैट यू विल नॉट अबैंडन हर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप रिलेशनशिप में आ गया ब्रेकअप नहीं कर सकते, दैट शी वोंट बी अबैंडन्ड अनजस्टली, you will not hurt her or betray her trust. That's all you need. It's literally all you need. That's the foundation of a very healthy relationship. Communication, of course, all these things also matter. Security really matters. Movie about motivation for life, I really don't know, man. I haven't seen a Rocky. Dekh lo, OG Rocky. I use lifts inside my shoe so I can rise up to 6 feet, but still find myself average in the younger crowd. सब लंबे हैं आजकल बेंच, कोई बात नहीं दोस्त, या कितने भी लंबे हो विशाल, आप अपने आप को ही रखो, ट्रस्ट मी, क्या होगा। देख यार दोस्त, मैं इतना देखो बताऊं, कोई ऐसा तो रूल मैंने कभी ऐसा न्यूज़ पढ़ी है कि सारे 5'11" से नीचे मर्द आजकल सिंगल पड़े हुए हैं, सभी सिंगल हैं वैसे तो, थैंकफुली आई डोंट हैव टू बी इन द डेटिंग पूल, गॉड इन टच वुड, बट या you will find somebody for your height as well. I'm 6 feet from Nepal. Congrats, man. Very few people have that kind of height, and everyone desires that kind of height. लाइफ लेसन हो सकता, देयर इज नो मूवी, रॉकी देख ले भाई, रॉकी का अगर तुम्हें समझ आ जाता है कि एक्चुअल लेसन क्या है तो बहुत बढ़िया है, बट अदर देन दैट आई रियली डोंट नो एनी सक्सेसफुल लाइफ मोटिवेशन। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख लो। Anyone struggling with addiction issues, read Lost Focus by Jonathan Hari. It distills a multitude in few pages, and it's never too late for compliant to people. अच्छा हाँ, वही है। Saw a video where a 4-year-old kid was surrounded by, हाँ यार, I saw it, man. It's horrible, man. मैं फुटबॉल खेलते आ भी गया, अभी भी लगे पड़े हूँ। मैं तो हूँ ही ऐसा यार दोस्त, क्या ही करूँ। दक्ष भाई, I'm almost 18 and insecure about my head because it's below 5'9". Any way to grow taller? Protein, exercise, that's it. Protein will help you grow. दाल खाओ हर दिन, दाल और चिकन, अगर चिकन नहीं खाते तो हर दिन दाल खाओ। Other than that, it's all genetics, dude. अगर आपके माँ बाप छोटे हैं तो आप सडनली 6 फुट 5 नहीं हो जाओगे, आपको अपनी बॉडी उस तरह से बिल्ड करनी पड़ेगी। I don't believe in the institution of marriage. Partnership is better concept than marriage. Partnership warrants more equality than marriage. Fair enough. I think as an institution, marriage is unnecessary, but it's important. Matlab, you can do without it, but I think there are some advantages to being married. But that's okay. That's a conversation for another day. Sergi suggests me a book that gives wisdom. So many books that can give wisdom. Atomic Habits हैं। या देखो, विजडम वाली बुक्स का बताओ क्या होता है। You can read the Almanac of Naval Ravikant. Almanac of Naval Ravikant. You can do that. How to deal with loneliness? Well, it sounds like a question का आंसर कि कोई पूछ रहा है कि दक्ष भाई, how can I stop being poor? I'll say get rich. But the only way to fight loneliness is two things. One, start being comfortable with yourself. Because loneliness, unfortunately, doesn't knock and announce itself. It can just happen on any random day. Yesterday night, I went out and met some people at the pub. Today, if I don't get the opportunity to, because let's say I want to make a YouTube video or I want to study for my classes, I am alone. And once I'm done with it, what am I doing? I'm in a foreign country and sara loneliness shuru ho jata hai. So start being comfortable with yourself, number one. And number two, do things that you like and find people that like to do the similar things. So for example, if you like football, find out ki match ki screening kahan ho rahi hai and just go. Just go to a screening of your favorite team, find people who also support that team and just be friends with them. Heard nice pair of shoes will, भाई अगर जूतों में ही लड़कियों को पटाने का होता ना तो आज सबके पास 20-20 पैर होते हैं. It's not, देखो, shoes are a part of the package, but the whole thing is dress properly, neatly, shower. आपके बाल ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, like properly करो, comb करो and everything. Make sure your beard is nice and neat. ऐसे नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे झाट की तरह हो रहे हैं, कर्ली एक जगह है एक जगह नहीं है, शेव कर लो फिर, whatever it is. So figure it out, man. Hi भैया, back, nice.
न्यू सॉन्ग ऑल ऑफ यू विल गेट एवरी आंसर ओके 5-2 कोई बात नहीं 17-year-old 5-10 कोई बात नहीं भैया मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो गए यू आर स्टिल लाइव आई एम स्टिल लाइव मेरे दोस्त 225 lakhs let's get to 250 man and then we can probably end it सभी सिंगल हैं अब तो जलाओ मत यार मैं वही कह रहा हूँ डूड सब सिंगल हैं यहाँ पे सब ही सिंगल हैं 6'2" भैया बहुत बढ़िया 6'6" प्रतीक ओ डैम oh damn what the fuck I am 5'4" and 5'9" I'm complaining and I'm telling you my friend you are 5'4" कुछ 5 फुट के भी बच्चे होते हैं अपने लड़के लोग वो आपको बोलेंगे तू 5'4" का तू क्यों कंप्लेन कर रहा है भाई बस वही है 5'9" isn't short lol 5'10" last 10 above 5'7" is good दक्ष भैया को अभी रहना पड़ेगा हाँ हाँ अब तो मैं रहेगा यार अभी मैं क्या टाइम हुआ इधर 2:12 15 मिनट और रहूंगा मैं Should government legalize the sale of human organs? The move could diminish illegal organ harvesting and black sale. Your thoughts? Sale of human organs? No, I don't think organs should be sold. Illegal harvesting. I don't think if you're talking about donation, that's a very different thing. If you're talking about selling, I don't think human organs should be sold. No, 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 no. I have to think about this, but I don't think so, man. I feel if you can good food, Daksh, you can avoid taking the women to fancy restaurant rather than trying for a picnic in St. Patrick's Park with a wine bottle and you food you made. Yeah, 100%, dude. You don't have to go on an expensive day to a nice restaurant. Honestly, even if you're talking about Ireland, you can just walk through Phoenix Park, grab something, grab even a hot chocolate and a sandwich, and you guys can just sit and talk next to the pond. And that's fair enough. Phoenix Park नहीं अपना Stephen's Green. उधर चले जाओ फिनिक्स पार्क में भी जा सकते हो ऑन अ मॉर्निंग वॉक सी द फकिंग डियर्स आई नो ऑफ अ पर्सन हु टुक दिस वुमन आउट टू द डेट into Dublin Zoo. See, so many things you can do. 6'2", which is same as Ronaldo height. Amazing. Do you notice how willing people are to open in a space where they feel friendly? Why do you think people don't share these things with the closed ones? It's easier to disconnect. I cannot do much except highlight a comment and say something about it. And people can go if they don't like what I have to say. If you're talking to a friend, you're in their face, live to live ho raha hai sab kuch. You say something, you don't know how they'll react. They might judge you, they might hate you, they might stop talking to you. There are risks of being open with somebody in person. Over here, क्या risk है? किसी ने कुछ highlight कर दिया मैं बोला नहीं नहीं ये तो गलत है वो चला गया खत्म. He doesn't have to listen to me. I don't have to listen to them. Whatever. So there is some sort of anonymity security. And I don't know how they look. I don't know where they live. I don't judge them. Whatever. खुद का खुश रखना सीख गए तो 90 हाँ, exactly भाई. Usually girls are short, but there is my girlfriend who's 6'3". What the 6'3"? Wow. Is she a model? Genuinely asking. All those concerned about height, Messi completed football. What's your excuse? Sale of organs it will only benefit the rich and put pressure on the poor people who will sell their organs. Good point, man. Old school purist. Good man. I feel if I can हाँ हो गया ये oh damn इतने comments आ गए हैं okay let me just see if I missed any good one there 24 के हो अक्षत okay झाट की तरह हो रहे हैं हाँ मतलब वो मत करना यार भाई I know it's a chill stream but फिर भी predictions no prediction I think okay fine Madrid will win 2-1 today one of my friends is 5'6" dating like smooth height really doesn't matter unless you have confidence in yourself and हमने सबसे पहले स्ट्रीम पे बात करी थी कॉन्फिडेंस कैसे आता है दोस्तों कोई चैट पे लिखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है मेड्यूसा स्टोरी इट्स डिप्रेसिंग यस आई हैव रेड वेरी सैड वी शुड एक्चुअली डू अ नाइस मिथोलॉजिकल स्ट्रीम आल्सो वन डे बट वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी एंड आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी जो मैं सून रिलीज करूंगा मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक मेंबरशिप आ जाएगी taller than my parents and my brother, but you know I study GD going and even 13-year-olds are 5'10". Lol. हाँ मैं भी अपनी फैमिली में सबसे लंबा हूँ dude. My parents I think are 5'7" and 5'9" and I am 6. So yeah. हाँ average Indian height is this. Even if it's made too big a country to be able to regulate. True. It's already happening. People are selling kidneys. Yes, but legalization can bring regulation and can bring standards, but I just think it's not a good idea, man.
Bulls. The sale of organs unethical in the first place. That's all I'm saying. Sale of organs should never be. She is not my girlfriend. She is my girlfriend. Okay, okay, okay. Gotcha, gotcha, gotcha. Why am I jinxing? I'm telling you, if I said Liverpool will win 2-1, you guys will get angry. How can you discount Real Madrid एंड मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो लिवरपूल की? एंड अगर मैं कह रहा हूँ कि लिवरपूल हारेगी, मेरे को लग रहा है, तो आप जिंक्स की बात कर रहे हो क्या? मैं थोड़ा, निधि भाई सही कहते हैं, पंडित थोड़ी हूँ मैं यार, यहाँ पे जिंक्स कर रहा हूँ यहाँ पे हैं. It's not affordable to live here. I'm sorry. Genuinely, I'm telling you, unless you are rich or you have a job or you have a scholarship, it's not affordable to live here. What's your opinion on pursuing MBA in Ireland versus Canada versus Germany? Do you want to stay in these countries? If yes, and you are young, first of all, check the Canada point system. It's very good to be in Canada. You can move to the US eventually. Germany's, I think, would second and third. I'd put Ireland because I don't know many. Actually, Smurfit school अच्छा है, so you can put Ireland and Germany equally. But first try for Canada and see आप उनके क्या करते हो. Membership लेनी पड़ेगी. Yes, अच्छी streams चाहिए कम लोगों के साथ जहाँ पे हम अच्छा discussion करें और बहुत अच्छे discussion होंगे उस stream पे. आपको membership you can take. दक्ष भैया to members be like 150 रुपया लगेगा. Yes. Hey bro, hey Anish, how are you, man? Yes. Man, I'm so tired of these jinxing junxing. It's not real for fuck's sake. And मेरे पास इतनी ताकत होती तो भाई आर्सेनल अब तक 3 पीट नहीं 20 पीट कर चुकी होती दोस्त, अगर मेरे पास इतनी शक्तियां होती. बट नहीं है 20 पीट करने की शक्तियां मेरे पास. हाउ टू बी योर मॉड? हाहा, बी रेगुलर, be not toxic, contribute to the conversation, and that's pretty much it. When ghost stories now, पंडित ने पूछ लिया है. नेक्स्ट हॉरर स्ट्रीम will not be of ghost stories or paranormal stories. Next horror stream will be about some really horrible, horrible people from history who have done horrible things. So it's not really a horror stream per se, although we can incorporate some horror into it, but it's mostly going to be, yeah, समझे? मेक म्यूजिक स्ट्रीम इज पॉसिबल. कॉपीराइट लग जाएगा दोस्त, एंड स्ट्राइक आ जाएगा इसमें, तो क्लेम भी नहीं आएगा, सीधा स्ट्राइक आ जाएगा. चिल स्ट्रीम इज बेस्ट. चिल स्ट्रीम विल ऑलवेज बी फ्री. One chill stream per week will always be free, so you can always join that. Yeah, yeah. Heights of some famous people: 5'5", 5'5", 5'6", 5'7", 5'4". Life cannot be measured in height. नहीं, success and height has no relation. These guys were asking about women, which I think has some relation, but not all women. Like, not all women always want tall people. They just want somebody who is secure, who can provide for them, and somebody who's a good person inherently, I would say. Okay. Like what Rasputin? Oh no, I mean, yeah, we can talk about Rasputin. We can talk about some famous Nazis, serial killers, and all those things. So we can do. I think उसमें मैं मोह को भी बुलाऊंगा. उसको I'll pitch the idea, and if he can come, तो हम वो सब भी कर लेंगे. ठीक है? Guys, 234 likes हुए हैं भाई. 16 likes बचे हैं. 24 का हो गया है. तू एक GF नहीं है क्या करूं? अच्छा, 24 के हो गए. देखो यार दोस्तों, मैं 28 साल के लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं करी है. देव नेवर बीन ऑन अ डेट. करो क्या मतलब? इफ यू वांट अ गर्लफ्रेंड, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, गेट अ नाइस बॉडी, start dressing appropriately, start working on your conversational skills, join some dating apps, रिस्क बढ़ाओ जैसे लोग कहते हैं. टेक योर शॉट्स. जैसे शांतनु कह रहे, टेक योर शॉट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. अक्षत भाई, अभी ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस 26-25 तक आ ही जाएगा. अभी भी रोते रहोगे कि मेरे गोद में कोई लड़की क्यों नहीं गिर रही, तो कभी नहीं आएगी. I late today. Any update? No update on Thomas Partey, dost. Most likely he's gonna miss this game. Maybe next week he'll come back. Yeah, dude, Gaurav, we've talked about this. I said ki you don't have to go to an expensive restaurant. You can even go to any park you want, and it's all good. I'm good, Pratyush. How are you, man? Okay. Adolf Hitler, people hate him, but I love him. I don't think Adolf Hitler was cool. I don't think you should even. There are very few things I judge people on. I think if you like Adolf Hitler, fair.
I don't agree with that, and I don't think you should ever say that to people that you like Adolf Hitler without any good justification. And I don't think he has any justification. He slaughtered a lot of people for his own gain. There is a Netflix show called Making of a Dictator or something similar like that. उसमें आप हिटलर वाला पढ़ो, देखना. बॉडी अच्छी नहीं है तो बनाओ दोस्त. अगर मोटे हो तो वेट लूज करो. एंड अगर दुबले हो तो मसल बनाओ और वेट गेन करो. 36 आएंगी, 36 मेरी वाली तो मम्मी लेंगी. अच्छा ठीक है. डू लिट. देखो यार, ये सब बहुत बहुत ऑप्शन है. दैट्स द थिंग. मेंबरशिप स्ट्रीम्स कैन बी वेरी थीम स्पेसिफिक आल्सो, सो वी कैन फिगर इट आउट. ओके. हाउ इज फिटनेस चैलेंज गोइंग? निधि और मानस का बहुत बढ़िया चल रहा है. मोह की तबीयत खराब हो गई. मुझे नहीं पता सूरज और जयंत का कैसा चल रहा है. मेरा बहुत बेकार चल रहा है, बट आई विल बी बैक. आई विल बी बैक, डोंट वरी. पढ़ने की कोशिश करी, प्रोडक्टिव नहीं हो पाया. वेस्टेड 30 मिनट्स. विल ईट डिनर 9:30 इंस्टेड टिल 1 फॉर यूसीएल मैच. यार देखो, अब भी प्रोडक्टिव नहीं हुए तो बाद में कैसे प्रोडक्टिव हो गए? वेस्टेड 30 मिनट्स हाउ भाई वैभव? टेल मी एग्जैक्टली, टेल मी हाउ डिड यू वेस्ट 30 मिनट्स, और मैं बताता हूँ तुम क्या करो. ये फैन इन द चैट फॉर रियल व्हाट? वन प्लेयर यू वांट आर्सेनल स्क्वाड नेक्स्ट ईयर? बेलिंगम. भाई, my life, job, kid, everything is going well, but nothing give me happiness. Feel like life have nothing left to give. What are you passionate about, भाई? मार्केट करोड़पति. सब आपको मिल रहा है. आपको कुछ ना कहीं से आपको ट्रू सुख मिलेगा, और आपको आंसर पता है. सबको आंसर पता है, और इसका कोई गलत जवाब नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ, इफ यू टेल मी राइट नाउ कि भाई मेरे को एक्चुअली ना एक ओनली फैंस मॉडल बनना है, एंड मैं लड़का हूँ बट मुझे ओनली फैंस करना है, लाइक करो. What's stopping you? There is no wrong answer to this, man. If you want to give up everything and start farming also, practical considerations होंगे, but you can start doing something on the side, down low, man. So yeah, no problem भाई देवदत्त. लोग कह रहे हैं एडोल्फ हिटलर किल मेनी जूस. यस, 24 को बोर्ड है, गांड फट रही है. बात तो हो गई थी यार हम दोनों की इसमें. पढ़ो यार, यहाँ पे स्ट्रीम पे क्या कर रहे हो? लुकिंग फॉर गुड इनसाइट. अ बैड पर्सन इज माई वे टू सेंस पीपल. I think it's I think I know why you're doing this, and I think I understand people do this. All I'll say is, uh, when you do these things, now, like looking the good inside bad people, it's nice to have empathy, but तुम्हारा चूतिया बहुत कट सकता है. So just be careful. Short guys around me do date girls, but there are very few guys compensated personality or are handsome. Something तो you have to excel ना. If you don't excel in height, something you have to excel. भाई क्या करें? Okay. Yes, go to sleep. 1:30 a.m. Good night. Good night. Enjoy. Any horror game? Outlast is very scary. Narcissism is very complex topic. On a serious note, it is a multi-faced demon. Hitler was just the cover of narcissism, man. When do I plan to come to India? Most likely Diwali. कहाँ है भाई अपना बंदा जिसने सारा टाइम वेस्ट कर दिया था? वैभव. बताओ भाई वैभव, कैसे टाइम वेस्ट किया तुमने? मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ तुम्हारा. अपार्ट फ्रॉम ghost stories, you can do stream on morals, life ethics. नहीं यार, ये सारी ना चीज़ें जो बहुत सब्जेक्टिव होती है ना, these will only be themed. I'm not gonna do a public free stream on this. Ethics, influential figures, ये सब वगैरह बहुत होते हैं. मैंने इसको चूज किया, उसको क्यों नहीं किया, ये सब, those will be member streams only यार. Okay. Last 5 minutes हैं guys, so we'll wrap up in 5. दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूं, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. फेयर इनफ. वी गॉट अ विन. यस. डिडंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन. विशाल ने क्या पूछा ही? ओके. आई don't get attached to girls so soon. When you have feelings for someone and talk to them, you kind of become boring or a bit calculative with their actions. Really? Okay, fair enough. I mean, yeah, you have a tendency to overthink every response and everything when you really, really like them. I think you just should let it flow naturally. Don't get, I mean, I'd say get attached to the girl, but don't get attached to the outcome of what happens when I talk to this woman. थकावट हो रही है, खुद को पुश करने का क्या ट्राई, फिर स्लीपी करने लग गया, स्लीपी फील करने लग गया, इग्नोर करा और पढ़ा, बट फिर आंख लग जा रही है. ashamed of myself. Dude, देख यार वैभव, I don't know what you have to do. अभी तो खाना खा लेगा, खाना खाने के बाद नींद आ जाएगी तुझे, फिर तू बोलेगा कल सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, कल तो मैं 6 बजे उठ के करूंगा. फिर 6 के तू 9 बजेगा, चलो भाई अब 11 से 2 बजे करेंगे.
फिर 11 से 2 में तो मोस्टली आधा घंटा पढ़ेगा, फिर बोलेगा "अब शाम को दोस्त पढ़ना ही पढ़ना है, 5 से 9 कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा"। फिर नींद लग जाएगी, अरे अब तो यूसीएल देखना, तो मैं इतने बजे करूँगा। डोंट डू दिस शिट, आई एम टेलिंग यू, यू विल रिग्रेट। इफ यूर फीलिंग स्लीपी, टेक अ शावर भाई, ठंडे पानी से नहा ले, ठंडे पानी से नहा, और देख क्या नींद भागेगी तेरी, और फिर पढ़ने बैठ जा। भाई ये सब तो तू आगे बढ़ते रहेगा। डिड यू सी द न्यू F1 मशीन? इट्स ब्यूटीफुल भाई नित्य, बहुत बढ़िया है। Brian Clough, no take on Brian Clough, man. I genuinely just stay away from Brian Clough related news. Wait, Brian Clough. Am I remembering or misremembering the person? Wait, Brian Clough. I just yeah, I thought you were talking about somebody else. His first for managing English. No, 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 no. Okay, I have no opinion on Brian Clough because I misremembered somebody else. I thought you were talking about an Irish person. Um, some other Irish person. Anyways, hi Daksh bhai, hey Soumyadeep. We're just ending though. So sorry. Okay, इंग्लैंड नहीं और पीएचडी कर रहे हैं साइबर में। थैंक यू सो मच भाई। चलो भाई, सी यू सी यू सी यू। Yeah, that's a better way. Just don't get attached to the outcome. Thank you. Missed my comment. Shadab, 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 Shadab. भाई पठान नहीं यार, नहीं देखी मैंने पठान दोस्त, नहीं हो पाएगा पठान। हाँ डूड, ठंडे पानी से नहा, सारी नींद भागेगी, और पढ़ ले, ठीक है। एंड मैं तो तुझे ये भी कह रहा हूँ डूड, वैभव, अगर पूरे दिन की पढ़ाई का टारगेट तूने अचीव नहीं किया ना, फक द यूसीएल डूड, कल तू पूरी हाइलाइट्स देख लेगा, कुछ खास मिस नहीं करेगा। पढ़ाई कर भाई तू आज। Who would win a match between Johan Liebert from anime Monster, not seen it, or Light Yagami from Death Note? Don't know, dude. I mean, I know Yagami, but I don't know about Monster wala guy, so I can't really say. Okay, मेरा गला भी बैठ रहा है। Bro, your thoughts on all-time horniness always? क्यों होती है horniness तुम्हें? I'm not even saying it as a joke. Why? Are you bored? And you get all these pornographic images and thoughts in your head. And then what do? हिला के सो जाते हो? Body को आदत पड़ गई है, bro. I'm not even joking. There was an experiment about this rat. इस rat के brain में एक electrode डाला था. And every time the scientist pressed a button, उस electrode से वो part of the brain used to get stimulated in the rat जो उसको pleasure या dopamine देता था, ठीक है। वो बटन रख दिया केज पे, रैट ने एक दो बार दबाया, सेल्फ को प्लेजर दिया बटन दबा के, ओके। उसके बाद उसी केज में खाना रखा और वो बटन था। रैट वुड गो ईट फूड, प्रेस द प्लेजर बटन, गो ईट फूड, प्रेस द प्लेजर बटन। धीरे धीरे प्लेजर की इतनी आदत पड़ गई उस रैट को, kept pressing the button, button, kept giving itself more dopamine hits, more pleasure, whatever it is, to the point ended up starving itself. Now, yeah, all I'll say is, तुम्हें जो full horniness वाले thoughts आ रहे हैं ना, it's either because you feel you have nothing better to do, or you've just grown accustomed to the pleasure of porn and masturbation, which I think you should stop. It's going to affect your life in ways you can't imagine right now. आज स्ट्रीम मिस कर दी, अभी वापस देखूंगा बाद में आराम से दोस्त, आराम से। 3 घंटे की स्ट्रीम है। आई रिकमेंड सम पीपल यू शुड रीड अबाउट दक्ष, अरिगो साची, यस, बॉब पेजली, श्योर, ब्रायन क्लो द मैनेजर, बेकम बाओ, होजे मोरिनो, सर एलेक्स, या listen, I try not to delve too much. I want to keep a healthy balance of football in my life, yeah. And as much as I'd like to read these books, मेरे book list में अभी बहुत different चीजें हैं। Yeah, just do it. वैभव कर ले दोस्त, ये you'll keep feeling bad for yourself. My productivity increased way more after quitting, bro. Quitting porn will change your life 100%. Okay, it's 2:30 here. I have to get at work in 1.5 hours, so I should now leave. चलो, नहीं देखी यार संगीता, आई एम सो सॉरी। शदाब ने भी पूछ लिया था, नहीं देखी मैंने पठान। ओके, सी यू ऑल। क्या है ओल्ड ओल्ड स्कूल प्योरिस्ट ने क्या रेकमेंड किया? नहीं भाई, ये सब तो ये सब मत करो। एनीवेज, थैंक यू, यू ऑल बिन लवली, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। किसने कंट्रीब्यूशन था, आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर। जाने से पहले एक और ऐड ले लो। एंड नाउ chill stream will be next week, horror stream will be in March, and that is pretty much it.
वॉच अलॉन्ग फॉर यूसीएल डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क आई हैव व्हेन आई कम बैक. अगर बहुत काम होगा तो कोई आई विल नॉट बी ऑन एनी स्ट्रीम, आई विल नॉट डू अ वॉच अलॉन्ग वट एवर, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा. एंड बस यार, मजे आए. नाइस टू सी यू ऑल. सी यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मैन. Quit porn and read books and all those good things. Chalo, bye bye. Love you all. Bye.